अरे पहना रहा हूँ 2 मिनट शूज पहले हुकूम तो करा ले। बात सुन ले, डायरी देख ले कहाँ पड़ी है तेरी, आज मैम को दे दियो तो ना तेरे पेड़ पिटाई हुई। ये देख ले डायरी पड़ी है, ठीक है। कॉपी तो आज इसका लाई नहीं कोई, हमने दी नहीं कल कोई कॉपी। अब लेके आना मैम को, ठीक। यहीं बैठा रहिए, मैं फोन कर
गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का वेलकम बैक अगेन। अभी आज का जो सेशन है अलग अलग फैकल्टी के पास में है, तो अभी वो 10 बजे स्टार्ट होगा। इफ यू आर एनीबडी वांट टू एनी सम क्वेश्चन यू कैन आस्क। मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, so before starting session you can ask. हेलो। Yes ma'am, tell me. सर मुझे एक चीज़ पूछना है। सर ये जो स्टडी मटेरियल्स है, हैंडआउट्स जो है, बस हमें इसी को कवर अप करना पड़ेगा या फिर इसके बाहर भी हमें मटेरियल से वो करना पड़ेगा थोड़ा? आप क्या 100% इसको कवर अप कर पाएंगे? सर कोशिश रहेगी लास्ट मोमेंट तक। बिल्कुल ठीक है, तो ये आप कवर अप कर लीजिए। पूरा रेफरेंस, पूरा जो भी आपका ऐड ऑन क्वेश्चन पेपर है इसी के इर्द गिर्द घूमना है, बाहर से कुछ नहीं जाना। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे पंजाब वाले इकट्ठे हो गए लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है। हैं? तुम तो गाड़ी में ही पढ़ने शुरू कर दिए हैं, कार में ही बिल्कुल पढ़ने। सर, हम तो उसके पहले ही बन गए। चलो अच्छी बात है, अभी करते हैं। देखो एक्चुअली टॉपिक इतना ज्यादा बड़ा है, देयर इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड टू हॉट एंड सब मोस्ट इम्पोर्टेंट की वन सीट इज देयर आउट ऑफ 1000%। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट ना, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। ट्राई एट योर ओन लेवल इज बेस्ट। अपनी तरफ से अपना जितना अच्छा हो करिए, होना ना होना अलग बात है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन का टाइम भी डिक्लेयर होने वाला है। और नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ तक मुझे लगता है गाजियाबाद एंड एनसीआर में 16 अप्रैल की डेट डिक्लेयर हुई है। ठीक है, तो इलेक्शन या तो आपका एग्जाम पहले हो जाएगा, नहीं तो फिर जून में होगा। तो इट विल बी डिसाइडेड विद इन 1 वीक। जैसा होगा हो जाएगा आपके पास में। वैसे प्रिपरेशन कैसी है सभी की? सुना है पढ़ाई बहुत कर रहे हैं सारे लोग। इतना अच्छा तो नहीं चल रहा है सर, मगर चल रहा है सर। चल कोशिश रहे, रहेगी सर। ठीक है। आज 4 फैकल्टी अलग अलग है। दे आर 4 डिफरेंट फैकल्टी एंड दे विल कवर अप। एक्चुअली 100% कवर नहीं हो सकता, तो इसलिए हम वो चीज़ देखिए, अभी भी सुबह के टाइम में अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो अभी ऑलरेडी फुल हो चुके हैं लाइन। ठीक है, तो अभी आज मोबाइल का कवर अप, मोबाइल का कुछ पार्ट है वो कवर किया जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। सर कोई प्रोविजन होगा ईबी में? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर कोई प्रोविजन होगा ईबी में छोटी सी ट्रेनिंग? बिकॉज सब जगह सीएम और सीएफ ही सारे लोग करवा रहे हैं, ईबी पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है।
आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आई, मैं स्पीकर की पहले आवाज बढ़ाऊं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अब आवाज आ रही, बोलिए। सर, ये जानना चाह रही थी कि ईबी में कोई छोटा सा कोर्स या छोटी सी कुछ रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सीएफए और सीएम का ही करवा रहे हैं। ईबी पे किसी का कोई फोकस ही नहीं है। ईबी में तो मैं पहले बता दूं, ईबी बेसिकली वो ट्रांसमिशन का पार्ट है मोस्टली, ठीक है ना। ईबी का कुछ क्वेश्चन बैंक है, आई विल शेयर ऑन द फ्राइडे, मैं फ्राइडे को शेयर कर दूंगा अलग से। जिन लोग ईबी वाले हैं वो अपना भेज देंगे, तो ईबी का तो कुछ है मेरे पास में, आई विल शेयर। ट्रांसमिशन का है बेसिकली वो। ईबी तो नाम, ईबी के तो दो ही तीन चैप्टर है मोस्टली, सिलेबस देखेंगे तो सब ट्रांसमिशन ही मिलेगा। बिल्कुल सर, वहाँ पे ऑलमोस्ट यही है। बिल्कुल उसका सर। जो भी पार्ट है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ईबी का है, मैं सर ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। बाकी कॉमन वाला पोर्शन है वो उनको करता हूँ। और वैसे भी केके, एक बार मैं एक एक चीज मैं इनको बता देता हूँ मैडम को। हाँ बता, केके, आवाज आ रही है ना मेरी? आर्य नरेंद्र जी बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कल और परसों में हम आपका ईबी का कुछ पोर्शन मैडम कवर करेंगे। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर। आपके क्लास इंचार्ज सर थे नरेश सर, ठीक है ना, उन्होंने हिंदी में लिखा इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। और आपने हिंदी में क्यों एंट्री कर। चलो ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए। भाई नहीं, वो तो ठीक है सर। वो अभी वो आएंगे ना सर, नागर सर। संजय आ रहा है। ठीक है। संजय आ रहा है। आज मोबाइल का है तो मोबाइल वाल में ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन जो कॉमन पार्ट है ना उसको फोकस किया हम लोगों ने, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है वो कवर नहीं हो सकता। लेकिन वो कोशिश है कि जो कॉमन पार्ट है जो सभी को बेनिफिट हो जाए वो सारा मिले। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल से आपने भरा है तो आज पूरा दिन फोकस मोबाइल पे ही है, तो देख सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फार्म भरा है, आप सभी लोग उसको भर दीजिएगा, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग उसको भरिए, इसको मत भरिए, इससे भरिए, इससे हम लोग आसानी रहेगा उसको हैंडल करना। सर, ये दोबारा भरना है जिन्होंने कल भरा था उनको भी, कि आप हर दिन भरिए, हर दिन भरिए, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड रखिए। ऐसा है ना कि उसको आप हर दिन मॉर्निंग में शेयर कर देंगे, उसमें आप हर दिन भर देंगे, हमारे आपके जो बैच इंचार्ज है नरेंद्र सर उसको कट आउट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे जरूरत होगी। तो जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको बाउंडेड नहीं है, ऑल आर आप ज्वाइन करें। अगर यूट्यूब के थ्रू भी ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी लिंक शेयर किया हुआ है, तो उसको आप उसको भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। आप लोग गूगल शीट भरिए, इसमें आप जो डाटा वो लिख रहे हैं ना उसमें भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। दैट कलेक्शन इज इजी थ्रू द गूगल फॉर्म, ऑलरेडी शेयर इन योर चैट बॉक्स ना। सेम यूट्यूब पे भी मैंने शेयर कर दिया है, तो उस पे भी आप लोग उसको भर दीजिए।
गुड मॉर्निंग सर, आ चुके हैं। अभी आप क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ सभी लोग। वेलकम टू संजय सर। नो पेन कॉपी देना। गुड मॉर्निंग सर। अभी लोग म्यूट रहिए, अभी हम शुरू कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर। पेन मैडम अनु ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। नाउ आवर संजय सर स्टार्ट टुडे द मोबाइल सेशन एंड ऑन बिहाफ ऑफ एलटीपीसी वेलकम टू संजय सर। आप अपनी सीट को संभालिए। बच्चे आपको एसडीओ बनाए। थैंक यू। बच्चे मुझे क्यों एसडीओ नहीं, मैं तो बना हूँ, मैं बच्चों का एसडीओ बनाऊँ। थैंक यू के सर। हाँ, उसी को शेयर करते हैं। ठीक है ना? ये जीएसएम मोबाइल कम्युनिकेशन। और दूसरी चीज ना सर, ये अभी यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने म्यूट हॉल में सभी का अलाउ किया। आप चाहे तो हटा दें, क्योंकि डिस्टर्ब होंगे ना तो यहाँ हटा के फिर यस कीजिए। हाँ, मतलब अभी म्यूट नहीं है ना। अभी अभी तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो म्यूट कर बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉगिंग पे डिस्टर्ब करने लगे। ठीक ठीक म्यूट ऑल। रिकॉर्डिंग
ठीक है, तो पार्टिसिपेंट नहीं करूँगा। मैं इसको शेयर कर, ये स्क्रीन शेयर है ना? हाँ शेयर है। स्क्रीन शेयर है, जो भी शेयर करेंगे। बस तो जो भी स्क्रीन का खोलेंगे शुरू हो जाएगा। Okay, good morning. Good morning to all of you. Today we are going to open our mobile chapter. Okay, okay. In this, the first is GSM mobile communication. Actually, I have PPT, but I'm not going through the PPT because the I मुझे ऐसा पता चला है कि जो भी पेपर आएगा that will comes from the handout. तो बेटर है हम हैंड आउट के थ्रू चलते हैं। इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी वो मैं एक्सप्लेन करता आपको चलूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क थ्रू द चैट। मतलब कोशिश कीजिए चैट से आप बात कीजिए। एंड इफ आई विल नॉट रिप्लाई फॉर दैट चैट देन यू कैन आस्क थ्रू ऑडियो आल्सो। ओके, तो हम अपना जीएसएम मोबाइल कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन है वो पहले हम जीएसएम की लेंगे, उसके बाद समथिंग अबाउट जीपीआरएस, देन वी विल टेल अबाउट द एज। तो यू कैन से दैट फ्रॉम 2G to 2.75G, जीएसएम नोन एज 2G, GPRS known as 2.5G, and as known as 2.75G. So today आज मॉर्निंग जो सेशन है we will go from 2G to 2.75G. तो in this GSM, तो GSM क्या है? GSM में there are some architecture और ये area and this is known as geographical area, these area. तो we can say the cell. Cell is the smallest geographical area which is defined in the GSM. Cell जो है वो smallest area होता है which is defined by the government. Okay, which is defined in the GSM. बेसिकली इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बीटीएस, अगर आपका बीटीएस इज ओमनी डायरेक्शनल, अगर बीटीएस ओमनी डायरेक्शनल होता मींस एक हमने बीटीएस इंस्टॉल करा है और वो केवल ऑल डायरेक्शन में सिग्नल रेडिएट कर रहा है। मतलब जस्ट लाइक राइट नाउ वी आर यूजिंग सेक्टर्ड बीटीएस, वो सेक्टर्ड बीटीएस नहीं है, दैट इज ए ओमनी डायरेक्शनल बीटीएस जो सभी डायरेक्शन में बीटीएस रेडिएट करता है। समथिंग लाइक अभी जो हमारा वाईफाई टाइप ऑफ एंटीना। तो then the area covered by that particular BTS is known as cell. Is it okay? But now nowadays we are using the sectored BTS instead of omnidirectional. We are using the sectored BTS. That means नहीं मनोज को पुलिस का हर BTS में अप्रोक्सीमेट 3 सेक्टर होते हैं, तो दो सेक्टर नोन एज सेल। तो ये सेल की डेफिनेशन है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें दैट इज द सेल इज ए स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। आई विल म्यूट ऑल। ओके ओके, तो सेल जब मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इन दिस द सेल इज द smallest geographical area and the group of cell is known as the location area and it is also known as LA, location area. okay, बहुत सारी सेल मिलकर एक लोकेशन एरिया बनाते हैं। दैट इज द लोकेशन एरिया एंड इन द लोकेशन एरिया वी आर डूइंग द पेजिंग and you for understanding point of view or for visualization you can say the area which is covered by one BSC, the all the BTS which is connected to one BSC is known as one location area generally। मतलब ये जनरल टर्म है, it is not 100% true, तो उसको हम लोकेशन एरिया बोलते हैं। एंड द वन MSC area, all the BTS which is connected to one MSC and the area covered by all those BTS is known as MSC area। PLMN area, that is a licensing area, just like BSNL Himachal, a PLMN. तो BSNL Himachal is different PLMN than BSNL Haryana। तो BSNL Himachal BSNL Haryana से एक different PLMN। ये these are the area wise which we have discussed। Then in mobile architecture
there are three subsystems in the mobile architecture. One is MS, second is BSS, and third one is NSS. तो यहाँ पर हम MSS का फंक्शन देखेंगे. फंक्शन ऑफ MS इन MS मोबाइल स्टेशन देयर आर टू इक्विपमेंट. MS में दो चीजें होती हैं, एक ME, अदर वन इज सिम. तो MS मीन्स ME. ME वो होता है जो यू हैव परचेज फ्रॉम द शॉप, just like Nokia का फोन, Redmi, ये these all are the ME mobile equipment and they all have one identity which is IMEI, International Mobile Equipment Identity. और एक SIM होता है which we have purchased from the operator, Subscriber Identity Module. उस SIM को हम जब ME में insert करते हैं then it will become the MS. Now it is ready to talk to our GSM नेटवर्क. तो सिम की एक आइडेंटिटी होती है विच इज नोन एज IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी. Okay, now what is the function of MS? The primary function of MS is to transmit and receive the voice signal. MS का जो primary function है that is this one. The primary function transmit receive the radio frequency and which is carrying the voice or data in the air. एक्चुअली ये जो बात कर रहे हैं हम मोबाइल टू BTS की बात कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज द मेन फंक्शन. अकॉर्डिंग टू पावर लेवल देयर आर 5 टाइप्स इन द theoretical they have written, but nowadays nothing is like that. Only 2 watt mobile we all are using, and apart from all is the history. Okay, now we comes over the identity. What are the identities of mobile? International Mobile Subscriber Identity, which is available in SIM as well as HLR. ये वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जो एक सिम में अवेलेबल होती है, दैट इज हार्ड रिटन इन दैट सिम. ये सिम में हार्ड रिटन होती है. ओके, ई रोम में लिखी रहती है, दैट इज द IMSI, International Mobile Subscriber Identity, and that is also available in HLR. जब हम HLR में इसको क्रिएट करते हैं, that is known as provisioning. So that known as provisioning, उसको हम provisioning बोलते हैं. वो सिम में provisioning हो जाती है उसकी. Okay, so that is a IMSI. IMSI is assigned to GSM users construct mobile country code. And इसका जो मतलब फॉर्मेट है वो समथिंग लाइक दैट MCC, MNC और MSIN. MCC is the mobile country code, MNC is the mobile network code, and MSIN is the mobile subscriber identity. Okay, ये इसका फॉर्मेट होता है IMSI का. MCC, MNC and MSIN. IMSI के ही अगेंस्ट एक टेम्पररी आइडेंटिटी इशू की जाती है VLR में. Actually before it na, HLR is the permanent database and VLR is a temporary database. So when you entered in a VLR area, the VLR area significance that if you have purchased SIM from Himachal, that means Himachal is your home location area, and you are right now you are roaming in the UP West area, Ghaziabad. That means you are in the UP West area. तो आप जो हैं VLR UP West में है, HLR आपका हिमाचल है. That is always fixed by the Himachal if you have purchased from the Himachal. So right now as you entered in the area of UP West VLR, then it will allocate one identity against the IMSI, and that identity known as TIMSI, Temporary Mobile Subscriber Identity. तो ये IMSI के अगेंस्ट ही allot की जाती है, और you can say this is the your name, permanent name, and this is your roll number. आप किसी क्लास में एंटर करते हैं तो वहां पे रोल नंबर मिलता है, that is the TIMSI against the IMSI. और जैसे जैसे आप चेंज करते हैं अपना क्लासरूम और आपका TIMSI चेंज होता रहता है. तो सो दैट इट नोन एज टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर
आइडेंटिटी और इसका स्कोप जो है सैनिक स्कूल हो गए, एनडीए हो गए, डिफेंस हो गए, वो तो खींच के रखते हैं, ताकि वो बच्चा थोड़ा जा वो निकल रहा, अच्छा तो निकला ये म्यूट दीजिए, तो बच्चे उसी के बाहर बैठ जाते हैं, और फिर ये आ जाते हैं। So that is the MC, and now that is the TMC and MSRN. When MSI is GIN and MSRN. MSI is GIN is your डायरेक्टरी नंबर, जो आपका टेलीफोन नंबर होता है जिसको आप डायल करते हैं, डेट नोन एज MSI GIN नंबर। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, CC, NDC एंड SN। CC मीन्स कंट्री कोड, NDC मीन्स नेटवर्क डेस्टिनेशन कोड, okay, CC, NDC and SN. CC is country code. In our case, this is 91. NDC is network destination code. If you had purchased him from the that one MTNL Delhi, तो उस केस में आपका जो NDC होगा that is 9868। और अगर यूपी वेस्ट से आपने सिम परचेज कराया तो at that case, at that scenario, your NDC is 9412। Okay, and other is rest 6 digit जो बचती हैं, that is your SN। तो टोटल आपके पास कितने, जो आपका टेलीफोन नंबर है 12 डिजिट का, दैट इज नोन एज MSI पिन। जैसे टिमसी एलोकेट होती है एमसी के अगेंस्ट टेम्परेरी, द सेम वे वी हैव ए सम टेम्परेरी नंबर फॉर MSI पिन आल्सो रूटिंग पर्पस। दिस इज नोन एज मोबाइल स्टेशन रोमिंग नंबर। जब भी आपके लिए कोई इनकमिंग कॉल आती है तो अगेंस्ट इन MSI पिन VLR will allocate you one number, temporary number only for routing purpose, that is known as MSRN। So basically MC or MSSDN, these are your permanent identity, and TIMC and MSRN, these are the temporary identity which we allocate for against the permanent identity। ठीक है, ये सब आइडेंटिटी हो गई। नाउ वी आर गोइंग ओवर द BSS। अब तक हमने जो देखा दैट इज द MS, वो हम MS के बारे में देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग ओवर द BSS, बेस स्टेशन सबसिस्टम। द BSS stands to BS इक्विपमेंट। अब BSS सिस्टम GSM में क्या होता है, देयर आर टू मेन नोड, वन इज BTS, अदर वन इज BSC। तो जो BTS होता है दैट इज फॉर द ट्रांसमिट एंड रिसीव फॉर द फ्रिक्वेंसी। ये ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है फ्रिक्वेंसी। एंड द कंट्रोलर ऑफ BTS इज नोन एज BSC। जो कंट्रोलर होता है BTS का दैट इज द BSC, वो BSC होता है। सर एक्सक्यूज मी, देयर इज an important call, I have to take this one, wait। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो BTS एंड BSC। BTS जो है वो BTS फ्रिक्वेंसी को ट्रांसफर रिसीव करता है, एंड BSC उसका कंट्रोलर होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। तो here the function of BTS as stated, primary responsibility of BTS is trans and receive। ओके, जो भी ट्रांस रिसीव है, स्पीच प्रोसेसिंग है, that all will be, or you can say the radio resource are given by the BTS। जो रेडियो रिसोर्स है फिजिकली दैट इज गिवन बाय द BTS, and those resources are configured into the BSC and controlled by the BSC। BTS और BSC का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सकता है, ये मतलब डेडिकेटेड हो सकता है, चैन हो सकता है, जिग जैग टाइप में हो सकता है, कि मतलब सीधे BTS BSC से जुड़ा हो सकता है, BTS बाया अनदर BTS जुड़ा हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का इसका कंसिडर हो सकता है। देयर इज ए वन थर्ड नोड आल्सो अवेलेबल इन द BSS, दैट इज नोन एज ट्रांसकोडर। ट्रांसकोडर क्या होता है,
coder. It will change the coding from PCM coded information to GSM coded information. PCM coded information होती है 64 kbps and GSM coded information होती है 13 plus 3. 13 speech and 3 is inbound signaling. So you can say the total is 16. So basically GSM coded information मानी जाती है 16 kbps and PCM coded information होती है 64 kbps. तो ट्रांसकोडर क्या करता है? That will change the speed as well as coding. ये change करता है 64 to 16 and 16 to 64. That is the work of transcoder. Now BSC. BSC is the main controller of GSM. ये आपका वहाँ कंट्रोल करता है all the BPS, all the radio resource, and it will aggregate. और ये that will the aggregate the traffic also. And all type of handover is managed by the BSC. Handover is also managed by the BSC. Okay, now we are going over the NSS. That is the third subsystem. It's known as NSS, Network Switching Subsystem. ठीक है, ये NSS है जो नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम है. इसके 5 मेन पार्ट हैं. वन इज MSC एंड GMSC. Other one is the 4 register or 4 database type of node: VLR, HLR, EIR, and AUC. Okay, we will see the function of one by one. The MSC. MSC is the mobile switching center. That is the main switching center, which are main node, which is available in GSM. MSC का क्या काम है? That will provide us the switching, routing, signaling, and charging. It will help in charging also, and it is also work as a GMSC. When your call is going outside of your PLM, so that is go via GMSC, gateway MSC. Okay, those are the function of MSC. Now VLR is a temporary database. It is integrated in MSC. VLR is so mainly we have written MSC oblique VLR. VLR known as visitor location register, and all the visited subscriber data is available in VLR. That means जो भी subscriber right now visit कर रहे हैं UP West में right now, it may be home subscriber, it may be your roaming subscriber. सबका data is available in current VLR. Okay, and when or that is a temporary database also. It also have the information about the location area, LA. HLR, that is a permanent database. ये permanent database होता है. It have lot of information which is permanent related to the subscriber, and those information only change by the man machine communication. ये information केवल और केवल man machine communication के through ही change की जा सकती है. And HLR also give data to the VLR. Whenever VLR is required, then it will update it through the HLR. Okay, and every HLR has the information of your current VLR address. जो भी current VLR होता है उसकी information HLR के पास available होती है. So that is all about the database. Apart from these, there are 2 more database, AUC and EIR. AUC जो होता है that is only for the authentication, and EIR for the equipment identity register. AUC authenticate करता है subscriber को. In the case of authenticate, there are 2 parameters, MC and KI. KI is the authentication key. So with the help of these, these 2 key, 2 input, MC and KI, it will generate a response that is known as SRES, signed response. Okay, and the same signed response is also generated by the same. If both response are same, then subscriber known as authenticated subscriber. Otherwise, it is okay.
EIR equipment identity register, EIR equipment identity register. It maintain three list: white list, gray list, black list. So white list होती है, those are the genuine subscriber which is available in the white list. और जो भी स्टोलन मोबाइल हैं या कुछ सब्सक्राइबर जिनको हमें ब्लॉक करना है, देन वी पुट दोज सब्सक्राइबर इनटू द ब्लैक लिस्ट. If your EMEI number is in blacklist, then the subscriber is not if your subscriber is in blacklist, then those subscriber not authorized to use the telecommunication services. And gray in between the black and white, the subscriber which is available in the gray list, those can do the communication but under observation. Okay, this is the, and there is a fourth one subsystem which is OMS, which is only for the operation and maintenance subsystem. So that is about the GSM architecture and mobile communication. Now we are going over the RF interface. In RF interface, there is a multiple access technique, which is in GSM we are using the FDMA and DDMA, frequency division, multiple access, and time division, multiple access. These are the technique which we are using in the GSM. Okay, so there are two types of channel which we have in GSM. One is known as physical channel and logical channel. Physical is actual channel, और you can say 200 kilohertz, and उसमें जो time slot होता है that known as physical channel. 200 kilohertz in frequency and 0.577 megahertz, millisecond is in time domain. Here, this is the physical channel, 200 kilohertz and 0.577. This is the physical channel. And what information going over this physical channel is known as the logical channel. वो logical channel होते हैं. Logical, there are two types of logical channel. One is the traffic, other one is the control. Channels होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. There is one logical channel and other one is the control channel. Traffic means actual data which is going over the channel, and control is the signal information or control information which is going over the time slot. So traffic channel जो होते हैं, the TCS is a channel. The 26 frame will become one multi-frame. एक multi-frame में 26 TCS channel frame is available in one multi-frame. Okay, and the one multi-frame 26 का जो multi-frame होता है उसकी duration होती है 120 millisecond. Okay, control. There are three types of control channel. One is the broadcast, second one is common control channel, and third one is dedicated control channel. So control channel are three types: broadcast, common, and dedicated. Broadcast channel का meaning है one to all. Okay, and common channel का meaning है one to many, and dedicated का meaning है one to one. One to all broadcast channel, the BCH channel are used by the base station. जो one to all है, all का मतलब होता है सारे सब्सक्राइबर जो भी उस रेंज में आ रहे हैं. That is available for all the subscriber. अब उसमें कौन कौन से चैनल आते हैं? These are the main three channel which comes in the category of BCH. अब ये तीन चैनल कौन कौन से हैं? FCCH, SCH एंड BCCH. FCCH हो गया frequency correction channel, SCH is synchronization channel, and BCCH is a broadcast control channel. ये तीन चैनल हैं जो GSM में यूज होते हैं: frequency correction channel, synchronization channel एंड broadcast channel. और ये तीनों के तीनों आपके only
डाउनलिंक चैनल होते हैं, दैट इज कम्स फ्रॉम बीटीएस टू मोबाइल। द सेम वे यहाँ पर 3 कॉमन चैनल होते हैं, रैच, पेजिंग चैनल और एजीसीएच चैनल। पीसीएच, रैच और एजीसीएच। पेजिंग चैनल विच इज यूज फॉर द इनकमिंग कॉल के नोटिफिकेशन के लिए चैनल होता है, दैट इज पेजिंग। रैच जब आपको आउटगोइंग कॉल या कोई कॉल करनी है या कोई भी इवेंट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल हैज टू साइन वन चैनल, दैट इज द रैच, रैंडम एक्सेस चैनल, ओके। एंड एक्सेस ग्रांट चैनल, उस रैच का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज एक्सेस ग्रांट चैनल। डेडिकेटेड चैनल, डेडिकेटेड मीन 1 to 1 channel. Wait, I have to take water. Okay, so dedicated channel 1 to 1 channel, and in this the main signaling channel is SDCCH. SDCCH, the standalone dedicated control channel, and there are 2 associated channels, SACH and FATCH. SACH is a slow associated channel and FATCH is a fast associated channel. जो routine information होती हैं those over the SACH, and the all information which is emergency type of information, those all information goes over the FATCH, fast associated channel. बस्ट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर सर इस तरह का है, दिस इज द बस्ट 1 टाइम स्लॉट। ये एक टाइम स्लॉट है जिसमें बिट जाती हैं, फिर 0.577 मिली सेकेंड का, दिस इज ए 1 टाइम स्लॉट विच इज हैविंग द बिट। तो देर आर टू ब्लॉक 57 + 57, 2 डेटा ब्लॉक, जो एक्चुअल यूजर डेटा है उसमें ये 57 + 57 ये ब्लॉक उसका है। बाकी दीज ऑल आर द एडिशनल बिट which is security point of view or synchronization point of view goes over the bust। तो ये एक टाइम स्लॉट है 8.25, जैसे फॉर एग्जांपल 3 बिट इज फॉर टेल पर्पज, 57 डेटा बिट, 1 is stealing bit, 26 is training sequence bit which is used for the correction and detection purpose, other one is stealing bit, and 57 is data bit, 3 is trail bit, and 8.25 bit duration is for the guard. And these type of 8 time slot will become 1 frame। अब इस प्रकार की 8 टाइम स्लॉट मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं, जीएसएम फ्रेम 0 to 7, एंड दीज फ्रेम इस तरह के 26 फ्रेम मिलकर 1 मल्टी फ्रेम बनाते हैं। तो दिस इज द टाइम स्लॉट, फ्रेम एंड मल्टी फ्रेम, ये मल्टी फ्रेम, ओके। दिस इज द बस टाइप ऑफ वी हैव इन, तो दिस इज गार्ड पीरियड 8.25 बिट to avoid possible overlap of now these are the 2 parameter which is required for the GSM। One is the frequency hopping. Frequency hopping means statistically 1 BTS is not radiate only 1 frequency, instead of 1 frequency it is radiating a group of frequency 1 by 1। so this phenomena known as the frequency hopping, और ये हम किस लिए करते हैं, सेलेक्टिव फ्रिक्वेंसी फेडिंग को ब्लॉक करने के लिए। इट मे बी पॉसिबल किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर कुछ फेडिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए वी आर यूजिंग द फ्रिक्वेंसी होपिंग। so that is about this one, and this is the processing which we have in mobile and BTS side। in mobile, once you speak something, so that speech goes over the speech coding, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है,
देन चैनल कोडिंग, ये एक्स्ट्रा बिट उसमें बिट स्टफिंग करता है, इंटरलीविंग बिट को छोड़ छोड़कर बिट को इधर उधर कर कर अरेंज किया जाता है। देन बस्ट असेंबलिंग, इसमें एडिशनल बिट 26 ट्रेनिंग सीक्वेंस डालकर बिट बनाई जाती है। देन साइफरिंग एंड उसको मॉड्यूलेट किया जाता है ओवर द जीएमएस के मॉड्यूलेशन। ओके, द सेम प्रोसीजर, जो ये प्रोसीजर है इसी को रिवर्स बीटीएस साइड में किया जाता है। और अगर स्पीच बीटीएस साइड से आ रही है देन दिस प्रोसीजर गोज बाय हियर एंड रिवर्स इज इन मोबाइल स्टेशन। ओके, तो स्पीच कोडिंग क्या होती है? स्पीच कोडिंग एनालॉग टू डिजिटल, एंड इन जीएसएम वी आर यूजिंग द आरपीई एलटीपी। दिस इज द स्पीच coded coder which we are using for the GSM in GSM। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेगुलर पल्स इंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन। दिस कोड इज यूज इन GSM। और चैनल कोडिंग हम किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज we actually here in GSM ना we are using the combination of two types of channel coding in GSM. One is block and other one is convolution. जो चैनल कोडिंग होती है वो यहाँ पर दो प्रकार की होती है, वन इज ब्लॉक कोडिंग एंड कन्वोल्यूशन कोडिंग। बाकी डिटेल पे बहुत, ठीक है। दैट इज द चैनल कोडिंग विच वी यूज इन जीएसएम। फिर इंटरलीविंग की डेप्थ जो है टू 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 डेप्थ इसकी, या टू टाइप्स ऑफ इंटरलीविंग वी हैव डन इन द GSM, or you can say the rearrangement of bit in the bus is known as interleaving। पहले क्या करते हैं? द बस्ट इज GSM, जो ब्लॉक है 57 के दो दो ब्लॉक बनाए जाते हैं 456 बिट में से, और उसको अरेंज किया जाता है। तो डेट इज ए टू लेवल इंटरलीविंग। पहले बिट में इंटरलीविंग होता है, फिर देन उस ब्लॉक में इंटरलीविंग होता है। 157 ब्लॉक इज फ्रॉम डिफरेंट coded information and other one is from the different block. So there are two level interlinked we have in GSM. Then modulation in GSM we are using the GMS के modulation, Gaussian minimum Gaussian modulation shift key। तो GMS के modulation we are using in the GSM। Timing advance, because in RF it may be possible that you are your different user have different distance from the BTS, so the path length is different. So for that purpose we are using the timing advance. If you are far from the BTS then you have to start early to reach a particular your frame in BTS. So that phenomena is known as timing advance। Okay. Now the power control, we have the frequency of power control in GSM is the 2 times in a second। एक सेकंड में दो बार जो फ्रिक्वेंसी इसकी होती है वो हम यूज करते हैं पावर कंट्रोल इन GSM। ठीक है, 13 टाइम्स वॉट में ये यूज होती है। द पावर ऑफ मोबाइल, मोबाइल से जो हम पावर रेडिएट कर रहे हैं दैट इज regulated by the network। Network will tell the mobile that power up or power down। This is known as the power control। So that is all about the GSM mobile communication। Now we are going to see the something about the GPRS and edge also। Great।
Okay. Up to now we have seen the GSM. तो GSM में जो था वो हमने देखा. That is also known as 2G. Now we are going to see the GPRS and edge. GPRS and edge. GPRS जो है that is known as 2.5G and edge is known as 2.75G. GPRS that is related to 97 or 97. Okay, that is General Packet Radio Service. That is the full form of GPRS. Earlier GSM is only for the वॉइस सर्विसेज. जीएसएम में हम डेटा सर्विस यूज नहीं कर सकते थे. दैट इज प्योर नेटवर्क विच इज यूज्ड फॉर द वॉइस. वो केवल और केवल वॉइस के लिए यूज हो रहा था जीएसएम नेटवर्क. तो वी हैव कम विद एट दैट टाइम वी हैड कम विद वन ओवरले नेटवर्क व्हिच वाज नोन एज जीपीआरएस. तो एक ओवरले नेटवर्क लाए हम इसके लिए फॉर द डेटा के लिए. उस टाइम पर उसको हमने जीपीआरएस सिस्टम बोला था. एंड मोस्टली वी हैव चेंज इन द कोर नेटवर्क. आरएफ सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम थी, लाइसेंस सेम था, एवरीथिंग वाज सेम. ओनली देयर आर सम चेंजेस इन द कोर नेटवर्क देन वी वर एबल टू इंप्लीमेंट जीपीआरएस. इसमें बेसिकली क्या क्या चेंज किया था हमने. मोबाइल सेट वी हैव चेंज फ्रॉम जीएसएम टू जीपीआरएस एनेबल्ड नेटवर्क. 95 के अराउंड की बात है. 95 टू 2000 के अराउंड. और बीएसएनएल में 2005 के बाद चेंजेस आए. एट दैट टाइम ना जीएसएम हैंडसेट वाज चेंज इनटू द जीपीआरएस enabled handset. Then TRU is also changed into the GPRS enabled TRU, and only with the help of SGSM. PLMN basis पर SGSM लगाए थे, जोनल basis पर मतलब 4 जोन में हमने we have implemented the GGSM, and with these changes we are able to give the data services. So that network known as GPRS service. क्या क्या सर्विसेज हमें जीपीआरएस से मिलती थी. इट कैन सपोर्ट IPv4, IPv6, BSS coordination radio services allocated for GPRS, enhanced QoS service for GPRS, charging billing for GPRS. Okay, so GSM release 4 2001 and GSM 5 2002. So these releases are related to 3G. अब इसमें जब हम when we was able to implement data services, तो हम क्या क्या services इससे मिल सकती थी. We can track the real time information of bus, train, airline, locating restaurant, other entertainment, value based or current location, lottery, e-commerce, banking, email, background. And the main advantage of GPRS user, instant access of data in connected to an office line that can also be used by the GPRS. और ऑपरेटर के लिए क्या मेन एडवांटेज थे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इट कैन गिव अस द वैल्यू एडेड सर्विसेज. वो same license or same operator से that are able to give the services, value added services. Now technically here we are going to implement GPRS. How we have implemented. Earlier we have this type of network, MS, BSS, NSS and external network. So this network we have, and with the help of this GPRS new PS4 network, we can give the value added services. So that is the radio resource and radio link management done by the BSS, and switching and routing mobility management done by the GPRS core network. और GPRS core network में हमने कौन कौन से 2 नए नोड लगाए थे. That was the SGSN and GGSN, and these all are the common node which we have in
GSM network also. अब इसमें दो नए नोड लगे केवल SGSN और GGSN, और यहाँ पर BTS में जो TRU था, that is CCU enabled TRU, and there is a one filter also available in BSC that was known as the PCU, packet control unit. Okay, the packet control unit that is uh, in, inbuilt into the BSC, that is a filter which can filter the voice service and data service, and voice service sent toward MSC. PCU एक फिल्टर टाइप की चीज थी, लो पास टाइप ऑफ फिल्टर। तो लो पास जो वॉइस सर्विसेज होती थी दैट कैन बी फिल्टर्ड आउट बाय PCU एंड सेंड टुवर्ड MSC, and if it is a data type of services then it is filtered and sent toward SGSN. SGSN क्या था? That is the you can say MSC in data network. जो हमारा SGSN है वो क्या है? That is the MSC of GPRS network, जो MSC फंक्शनलिटी करती है मोबाइल नेटवर्क वॉइस नेटवर्क में, that all will be done by the SGSN. वो सारी सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? SGSN, सर्विंग GPRS support node. And GGSN, GPRS support node, it is the GMSC of GPRS network. जो फंक्शनलिटी GMSC हमारा GSM नेटवर्क करता है, if your call going outside of network then it go via GMSC. The same way if your data call go via outside your network then it will go via GGSM. Packet control unit, the PSU separate the circuit switch and packet switch traffic from the user and send them to the GSM and GPRS network respectively. If it is a voice call, then it goes toward GSM. Or if it is a data call, then it goes toward GPRS. That is available in BSC. CCU channel coded unit. मतलब चैनल कोडिंग इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी GPRS में, तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू रिप्लेस ऑल TRU। जो भी हमारे GSM के TRU थे वो हमें रिप्लेस करने पड़े। एंड कौन से नए TRU वी हैव इंस्टॉल्ड इन द BTS, दैट इज CCU enabled, जिनके पास GPRS की कोडिंग स्कीम अवेलेबल थी। वी हैव इंस्टॉल्ड दोज TRU इन द BTS। देन SGSN. SGSN is the most important element of GPRS network. SGSN of the GPRS network is equivalent to the MSC GPRS GSM network. There must at least one SGSN in a GPRS network, or you can say the one PLMN. In every PLMN, we have installed one SGSN, and there is a coverage area associated with SGSN. As the network expands and the number of subscribers increase, there may be more than one SGSN in a PLMN. What are the functionality of SGSN? The functionality of SGSN, it will doing the work of protocol conversion. For example, IP to FR and FR to IP. IP Internet Protocol to frame relay and frame relay to IP. Ciphering of GPRS data between MS and SGSN. Data compression is used to minimize the size of transmitted data unit. Authenticate of GPRS user. GSM में हमारी MSC करती है, तो यहाँ पर हमारी SGSN करती है। Mobility management, routing of data, interaction with the NSS,
It will collect the charging data pertaining to user of GPRS user. And gateway GSM, the GSM is the gateway to the external network. जब भी कोई डेटा कॉल आपके नेटवर्क से बाहर जाएगी, that is go via GGSM. Every connection to fixed external data network has to go through the GGSM. And the working of GGSM क्या क्या करता है? Routing mobile destined packet coming from the external network to the relevant GSM. Routing packet originating from the mobile to the first external network. Interface to external IP network and deal with the security issue. Collect charging data and traffic statistics. Allocate dynamic or static IP involved in the establishment of tunnel adjacent and with other external network. GPRS MS इसकी 3 क्लास इन्होंने डिफाइन करी, क्लास A, B, C. क्लास C मीन्स है कि प्योर GPRS और अल्टरनेटिवली यूज ऑफ GSM एंड GPRS ओनली. ये केवल और केवल या तो GSM नेटवर्क में यूज होगा या फिर GPRS में यूज होगा. आप इसको मैनुअली स्विच कर सकते हैं फ्रॉम GSM टू GPRS. ओके. क्लास B simultaneously it can attach activation, monitor and no simultaneous traffic. ये साइमल्टेनियसली अटैच हो सकता है बट आइडल मोड में. बट व्हेन इन इट इज इन एक्टिव मोड, जब भी एक्टिव मोड में जाएगा और देयर इज ए कॉल, जब एक कॉल होगी, वेट, जब भी कॉल होगी सर, तो वो या तो GSM नेटवर्क में होगी या फिर GPRS नेटवर्क में होगी. एंड क्लास ए दैट कैन बी डू द साइमल्टेनियस ट्रैफिक इन GSM as well as GPRS. The edge or enhanced data rate for global evolution is the new mantra of the global internet connection. Edge is the new name of GSM 384. एक्चुअली क्या है कि GSM में कोई स्पीड नहीं मिलती थी हमें डेटा की, फिर भी विद द हेल्प ऑफ मॉडम, अगर आप मॉडम के थ्रू उसमें अचीव भी कर सकते थे, तो GSM की स्पीड मानी जाती है 9.6 kbps. GPRS की स्पीड मानी जाती है 144 kbps एंड एज की स्पीड होती है 384 kbps. तो इट इज आल्सो नोन एज GSM 384. द टेक्नोलॉजी वाज नेम्ड GSM 84 बिकॉज द फैक्ट इट कैन गिव अस 384 kbps विद द हेल्प ऑफ 200 किलो. तो ये एज में भी हमारा सब कुछ सेम था, बट यहाँ पर क्या था, मेन डिफरेंस था हमारा modulation का. Instead of GSM modulation, here we are using the 8 PSK modulation. Okay. हम GMS के modulation की जगह 8 PSK modulation करते हैं. So that is all about GSM, GPRS and Edge. ठीक है. ये सारा कुछ GSM, GPRS, Edge के रिगार्डिंग हो गया. Anything else? Now that this session is open, if you want to ask, you can ask. अब आप कोई भी बात पूछ सकते हैं. जी बताइए, किसी को कुछ पूछना है? इसकी एज की GPRS की इसकी ना स्पीड एक बार दोबारा बताइए. किसको सर? स्पीड बताइए ना आपने अभी. एज की GPRS की. ऐसा है सर, GSM की स्पीड 9.6 kbps, GPRS की 144 और कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में 171 kbps भी मिलेगी. एंड एज की होती है सर 384 kbps. और तीनों के लिए सेम फ्रिक्वेंसी यूज होती है 200 किलोहर्ट्ज. एंड मॉड्यूलेशन स्कीम GSM एंड GPRS की GMS के है, जिसमें हम 1 बिट पर सिंबल ले जाते हैं. एंड एज में हम वो मॉड्यूलेशन स्कीम चेंज कर देते हैं फ्रॉम GMS के टू वी आर गोइंग ओवर द 8 PSK. तो वहां हमारी स्पीड 3 टाइम्स हो जाती है. तो दैट इज नोन एज 384 kbps. ये स्पीड है सर तीनों. एनीथिंग एल्स? कुछ और?
जी कोई और क्वेश्चन सर? ठीक है, फिर नाउ आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। और जो पीपीटी है वो आपको शायद मैंने वैसे आपके ही हैंड आउट से पढ़ाया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी 1-2 मिनट और देख सकते हैं, नहीं है तो मैं फिर ये एंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपने टाइम पर स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू सर। सर नोट्स कैसे मिल पाएंगे? हेलो। हेलो। हेलो।
Sir, I not getting your speech. अभी क्लास चल नहीं रही है, अभी 2 मिनट बाद स्टार्ट होगी। I think इसको जो भी can be good. नहीं ठीक है, इससे काम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, इसमें अच्छा वो चीज़ तो हो जाएगी ना। Sir, good morning. यस गुड मॉर्निंग। अभी आप ना 1 मिनट वेट करें, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट एंड देन वी विल Sir, स्टार्ट दिस। you are my even E2, you are my class teacher. अच्छा 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 अच्छा, Okay, okay, sir. ठीक है ठीक है। जी जी sir. तो ठीक है, अभी जो टॉपिक है, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी सर, आ रही। ठीक है आ रही सर। ठीक है। तो अभी जो टॉपिक है ना वो है आपका ओवरव्यू ऑफ WCDM। तो व्हाट इज WCDM? सो WCDM स्टैंड्स फॉर वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो अभी जो पहली क्लास थी जो संजय जी ने ली है उसमें आप लोगों ने जो सीखा है अबाउट 2G और GSM टेक्नोलॉजी। तो GSM इज बेस्ड ऑन विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक? TDM में FDM में। तो यस यस, हेलो। हाँ बताइए। यस प्लीज टेल। सो GSM इज बेस्ड ऑन TDM में प्लस FDM। ठीक है, तो व्हाट इज TDM? TDM इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, and in case of TDM what is there, that some resource is there and that resource will be used by different users but their timing will be different. ठीक है। In case of FDM frequency division multiple access, we are having a pool of frequencies and those frequencies or carriers will be used by different users but their timing will be same.
So before WCDM में we were using CDM, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक ना, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। CDM. So what is CDM? CDM is code division multiple access. Code division multiple access technique. Multiple access. Okay. So in case of CDM, what is there? Na, कि we are using code for every operation. Some code is there. We are operating in code. For user, we are having code. For sectors and cells, we are having code. For channels, we are having code. So in case of CDMA, we are operating on code. So earlier we were using CDMA or the WL in case of the WL services. In case of CDMA, what is there? What is the carrier size for CDMA? किसी को आइडिया है? Carrier size. और the carrier separation for CDMA services? 5 megahertz का सर. No. So that was 1.25 megahertz. So in case of CDMA, I am not talking of WCDMA. तो सबसे पहले आपको थोड़ा CDMA जानना चाहिए। तो CDMA के केस में क्या है, जो कैरियर साइज था that was 1.25 megahertz. ठीक है? What is the carrier size for GSM? Nine kilobits. What is the carrier separation for GSM? 9.6. 9.6 kbps. So carrier size Sir, or carrier yes. 200 kilohertz. Yes, very good. So the carrier size for GSM is 200 kilohertz. So you should remember all these parameters. These parameters are quite important. So carrier size or carrier separation for GSM is 200 kilohertz. Carrier size for CDMA is 1.25 megahertz. ठीक है? Sir, 9.6 kbps, it means this is a speed of access GPRS. So that is the basic speed, basic data speed in case of the GSM. kbps, yes sir. Yes. ठीक है, तो इसमें जो अगला जो पॉइंट है वो है WCDM में डेवलपमेंट फ्रॉम GSM एंड CDM में। इसी में कहीं पे ना ये सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं इन लोगों ने कि ये CDM में क्या है या WCDM में क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDM के अंदर जो आपका जो कैरियर साइज है वो कितना है, 1.25 मेगाहर्ट्ज था। इसके अंदर ना एक पैरामीटर और आता है, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, कई बार ये चीजें एग्जाम में आती है। Please speak in English, sorry. हाँ, इसमें जो थर्ड पैरामीटर है फॉर CDM में दैट इज द चिप रेट। तो जो चिप रेट था दैट वाज 1.2288 मेगा चिप्स पर सेकंड। अब ये चिप रेट क्या होता है ये हम लोग थोड़ा अभी आगे जाकर चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 पैरामीटर देखे हैं फॉर CDM में इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, कैरियर साइज फॉर CDM में इज 1.25 मेगाहर्ट्ज and chip rate for normal CDMA is 1.2288 mega chips per second. ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज ए मल्टीपल एक्सेस टेक्निक वेयर द यूजर्स आर सेपरेटेड बाय यूनिक कोड which means that all the users can use the same frequency and transmit at the same time. तो नॉर्मली GSM के केस में क्या होता है कि वी आर ऑपरेटिंग ऑन TDMA प्लस FDM में। तो वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम लोग FDMA में ऑपरेट करते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा शायद कि अगर मान लो कोई ये हमारे पास कोई BTS है, सपोज दिस इज द BTS, so we are dividing the coverage of the BTS into different sectors like this. Suppose this is the A number BTS,
So this is the alpha sector, suppose this is the beta sector, and this is the gamma sector. So in normal GSM, what is there? Suppose in alpha sector, I am using frequency F1. In beta, I am using frequency F2. And in gamma sector, I am using frequency F3. So all these frequencies, they have to be different. ये दोनों तीनों frequency आपकी अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। अब अगर इसी साइट के आसपास आप कोई दूसरा बीटीएस इंस्टॉल कर रहे हो, मान लो आपने यहाँ पे ये बीटीएस इंस्टॉल कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो ये फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे F3 लेनी पड़ी, F4 लेनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे आपको F5 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ये क्या करना पड़ेगा आपको, ये F6 लेना पड़ेगा। रीजन क्या है कि वी आर ऑपरेटिंग ऑन एफडीएम में इन केस ऑफ नॉर्मल जीएसएम। तो नियर बाई एरिया में हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी को रिपीट नहीं कर सकते, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो आप तो तीसरा बीटीएस लगा रहे हो यहाँ पे, अब ये थर्ड बीटीएस है, दिस इज अवे फ्रॉम द फर्स्ट बीटीएस, तो यहाँ पे अगेन क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर सकते हैं। तो अगेन आई कैन रीयूज फ्रीक्वेंसी F3 हियर, F2 हियर एंड F1 हियर, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रीयूज इन केस ऑफ द नॉर्मल जीएसएम। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नियर बाई साइट में या नियर बाई बीटीएस में हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिपीट नहीं करते हैं, वी आर यूजिंग द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बट आफ्टर सम गैप और आफ्टर सम डिस्टेंस वी कैन रिपीट द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द नॉर्मल जीएस। बट सीडीएम में या WCDMA के केस में क्या है कि वी आर ऑपरेटिंग ऑन द कोड, वी आर यूजिंग कोड फॉर एवरी साइट एंड सेक्टर, वी आर यूजिंग कोड, सो वी आर यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट कोड विल बी डिफरेंट। तो इस लाइन का मतलब यही है। Now this is the CDMA 2000. So CDMA 2000 basically क्या, this is the version of CDMA, है ना, इसको हम लोग CDMA 1 भी बोलते हैं, CDMA 1 एंड CDMA 2000। अगेन यहाँ पे इन लोगों ने ये मेंशन कर रखा है कि जो कैरियर साइज है कितना है आपका, ये 1.25 मेगाहर्ट्ज। तो ये पैरामीटर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये CDMA या WCDMA में काम कैसे करता है, तो इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे कि 1.25 मेगाहर्ट्ज रेडियो सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाई ये स्प्रेडिंग सिग्नल which is the pseudo noise code sequence। तो बेसिकली होता क्या है इन केस ऑफ CDM में और WCDM में हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, इसको हम लोग स्प्रेड करते हैं बाय यूजिंग सम स्प्रेडिंग कोड। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, सपोज दैट इज 1 दिस इज माई इंफॉर्मेशन, this is my information. So what will I do? Suppose my information is 1. Then what we do, we are using, then we have to use one spreading code, ठीक है। Suppose my spreading code is 1001. I am just telling you how this CDMA or WCDMA works. What is the basic principle? Suppose our information is 1111. We want to transmit this information from BTS to some mobile handset. So what is the procedure? So information is 11. इसको So information is 11. Then we will use some spreading code. Suppose I am using spreading code 1001. So with the help of this spreading code, we will spread the information. So what will I do? Simply, I will take the first bit. So first information bit is 1. And I will do some operation on this 1 with the help of this spreading code. मान लो हम इसको ना ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा जो स्प्रेडेड सिग्नल होगा वो क्या होगा, spreaded signal will be, so first information bit is 1
and we will add this bit to the spreading code. So if you add this 1 with 1, so you are getting 0 like this. Again you take the first bit and add with 0, so you are getting 1. Take this bit, then 1 plus 0, this will be 1. Take this bit and again add this 1, so you are getting 0. सिंपली हम लोगों ने क्या किया है कि जो पहली इंफॉर्मेशन बिट है जो हमारी 1 है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, स्प्रेडिंग कोड के साथ में सिंपल एडिशन कर दिया है. सो वी आर गेटिंग 0 1 1 0. इन द सेम वे यू टेक द सेकंड बिट. तो सेकंड बिट क्या है हमारे पास में 1 है, या हम इसको 0 कन्वर्ट कर लें, 0 में चेंज कर दें. सो इंफॉर्मेशन इज 1 0. नाउ अगेन जो सेकंड बिट है हमारी इंफॉर्मेशन की, दैट इज 0. अगेन वी विल डू द सेम प्रोसीजर. हम 0 को ऐड करेंगे इन द स्प्रेडिंग कोड. तो 0 plus 1 it will be 1. 0 plus 0 this will be 0. 0 plus 0 this will be 0, and 0 plus 1 this will be 1. So this is the spreaded signal. इसी को हम लोग बोलते हैं spreaded signal. तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि in place of transmitting this 1 0, now we are transmitting this information 0 1 1 0 and 1 0 0. So this information we will transmit. At the end of the receiver what will happen? हम लोगों को यही रिसीव हो जाएगा जो हमने ट्रांसमिट किया है. सो वी विल रिसीव दिस इंफॉर्मेशन 0 1 1 0 एंड 1 0 0 1. ठीक है. अगेन व्हाट वी विल डू एट द एंड ऑफ द रिसीवर. तो at the end of the transmitter we have spreaded the information, so at the end of the receiver we have to despread it, equal and opposite operation. And for despreading we have to use the same code. हम लोगों को वही कोड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जिस कोड से हम लोगों ने इसको क्या किया है, स्प्रेड किया. तो despread कोड हमारे पास क्या होगा, despread कोड will be 1 0 0 1. अगेन वी डू द सेम प्रोसीजर जो हम लोगों ने ट्रांसमिट एंड पे किया है. हमने सिंपल एडिशन किया था, तो अगेन वी विल डू द सिंपल एडिशन. सो यू टेक दिस बंच एंड यू ऐड विद दिस डिस्प्रेडिंग कोड. अगेन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस 0 plus 1, so you will get 1. 1 plus 0 you will get 1. 1 plus 0 you will get 1, and 0 plus 1 you will get 1. Again you do the same procedure on this bunch also ना. तो सिंपल एडिशन करेंगे हम लोग दिस डिस्प्रेडिंग कोड के साथ में, तो यू विल गेट 0 0 0 0. लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द मेजॉरिटी लॉजिक. सो इन दिस बंच वी आर हैविंग 4 times 1, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल बी 1. और यहाँ पे क्या है, वी आर हैविंग 4 times 0, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जी. तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ट्रांसमिट एंड से हम लोगों ने ट्रांसमिट किया 1 0, और रिसीवर एंड पे हमको यहाँ पे क्या है 1 0 यहाँ पे हम लोग रिसीव हो गया. ठीक है. तो इन केस ऑफ CDM में और इन केस ऑफ WCDM में द इम्पोर्टेंट थिंग इज कोड. जिस कोड से हम लोग इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द सेम कोड वी हैव टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ CDM एंड WCDM. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ वी कम टू दिस WCDM में ना. अब WCDM के केस में क्या हुआ है, तो WCDM में इज ए स्टेप फर्दर इन दी CDMA टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे जो बेसिक चेंज हुआ है वो किसके अंदर चेंज हुआ है, क्या कोई मुझे बता सकता है. जब हम लोगों ने ट्रांजिट किया है फ्रॉम CDMA टू WCDM में, तो व्हाट इज द बेसिक चेंज. डाटा रेट और बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड सर. तो यहाँ जो बेसिक चेंज हुआ है इन केस ऑफ WCDM में, ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. एक तो हुआ जो आपका जो कैरियर साइज है ना, जो पहले 1.25 मेगाहर्ट्ज था इन केस ऑफ CDM में, नाउ इन केस ऑफ WCDM में दिस साइज, कैरियर साइज हैज बिकम 5 मेगाहर्ट्ज. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज WCDM में. देखो जो चीज पहले हमारी नॉर्मल GSM में 200 किलोहर्ट्ज था,
CDM में कैरियर साइज हमारा 1.25 मेगाहर्ट्ज हो गया, और अब कितना हो गया, ये 5 मेगाहर्ट्ज हो गया, तो ये वाइड हो गया है ना, बैंड हमारा वाइड हो गया, तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज WCDM में, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो एक तो आपको ये पैरामीटर याद होना चाहिए कि जो कैरियर साइज इन केस ऑफ WCDM में दिस इज 5 मेगाहर्ट्ज। एंड सेकंड थिंग इज चिप रेट ना, now chip rate in case of this WCDM is 3.84 mega chips per second। ठीक है, अब ये चिप रेट क्या है हम लोग थोड़ा अभी आगे आने वाले इसमें देखेंगे। तो WCDM में इसकी फुल फॉर्म वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एक्सेस टेक्निक भी यहाँ पे WCDM में है। कैरियर साइज यहाँ पे कितना है हमारा 5 मेगाहर्ट्ज, कैरियर हमारा थोड़ा वाइड हो गया, तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज WCDM में, एंड चिप रेट इज 3.84 मेगा चिप्स पर सेकेंड। तो ये जो तीनों पैरामीटर हैं ये आपको याद होना चाहिए। The main benefits of the wideband carrier or WCDM में with a higher chip rate are support for the higher bit rate ना, तो जो बेसिक जो बिट रेट है या जो बेसिक डेटा रेट है इन केस ऑफ WCDM में और 3G 2 Mbps, इट इज सपोर्टिंग हायर बिट रेट्स। क्वालिटी ऑफ सर्विस भी यहाँ पे हायर है, और जो स्पेक्ट्रम को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर यूजिंग इट एफिशिएंटली। ठीक है, तो सपोर्ट फॉर हायर बिट रेट दैट इज वन फीचर ऑफ WCDM में, है ना। स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी इज हायर, वी आर यूजिंग द कैरियर और द स्पेक्ट्रम एफिशिएंटली, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस वी आर गेटिंग हायर। व्हाट इज द रीयूज फैक्टर फॉर WCDM में? सो रीयूज विल बी 1, क्योंकि CDM में और WCDM में जो आसपास के हमारे जो सेल्स एंड साइट्स है ना, वी आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी बट कोड विल बी डिफरेंट ना, तो यहाँ पे ये रीयूज फैक्टर है दैट इज 1। अभी हम थोड़ा ना रैन वाला पार्ट भी देख लेते हैं WCDM में का ना, कि WCDM में के रैन वाले पार्ट में क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये कंपैरिजन दिया हुआ है इन GSM रैन और WCDM में रैन ना, तो रैन इज रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो नॉर्मल GSM के केस में क्या होता है कि वी आर हैविंग 3 सब सिस्टम्स, एक को हम लोग बोलते हैं NSS नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, एक होता है BSS, तो जो BSS क्या है, बेस स्टेशन सब सिस्टम। ठीक है, एंड थर्ड वन इज दी OSS। अब BSS के अंदर क्या होता है, जो बेस स्टेशन सब सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास वी आर हैविंग BTS एंड BSC। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल GSM। तो नॉर्मल GSM के केस में क्या है, दिस इज द BTS and BTS is connected to the BSC. So the interface between BTS and BSC is, which interface is there? ABIS. This ABIS interface। ABIS. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये हैंडसेट लिख रखा है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द हैंडसेट, सो इंटरफेस बिटवीन हैंडसेट एंड द BTS इज द UM UM interface। Air interface. बात कर रहे हैं यार ये। So interface between handset and the BTS is the UM interface, and this UM interface is the open interface. Open means it will support all type of handset, na? Then interface between BTS and BSC is the ABIS interface, ना? And this ABIS interface is closed interface। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अगर BSC and BTS they should be of same make, दोनों एक ही वेंडर का होना चाहिए। So ABIS interface is the closed interface। Then we are having BSC, base station controller, okay, and then BSC is connected to your MSC through transcoder, na? So interface between your BSC and your core network, na, that is the A interface।
Again, this A interface is the open interface. It means MSc and BSc they can be of different way. ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि यूएम इंटरफेस कहाँ है, एबीसी इंटरफेस कौन सा है और ए इंटरफेस कौन सा है, ये सब आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए. देन वी मूव टुवर्ड्स दिस WCDM में रहना. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हम लोग इसको BSS को वी आर कॉलिंग इट एज रैन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क ना. तो यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी आपको पता होना चाहिए. एक तो क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे हैंडसेट लिखा हुआ है ना, हैंडसेट को हम लोग यहाँ बुलाते हैं यूई. हैंडसेट इज द यूई. व्हाट इज यूई? यूजर इक्विपमेंट सर. Yes, yes, very good. So UE stands for user equipment. So handset is the user equipment or the UE. BTS, base trans receive station ना, in the normal GSM. BTS को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं नोड बी. ठीक है, so this is your node B. अब यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो इंटरफेस बिटवीन यूजर इक्विपमेंट एंड नोड बी इज, विच इंटरफेस इज देयर? UU interface is there. So we call it as UU interface. Then after node B, we are having BSC. And BSC is known as RNC in case of this WCDM में ना. What is RNC? Radio Network Controller ना. नीचे लिखा भी हुआ है कहीं पे, Radio Network Controller. ठीक है? So RNC is equivalent to BSC. So RNC is your Radio Network Controller. Now what is the that is IUB ना. तो IUB is the interface between node B and RNC. ठीक है, and after RNC we are having the core network. So core network is same for WCDM में और normal GSM. We are using the same core network. ठीक है, so if we are having circuit switching, तो interface between RNC and core network will be IUCS, and for packet switching, interface between RNC and this core network will be IUPS. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो थोड़ा आपको ये, एक तो जो नेम ऑफ द इंटरफेस है, लाइक यूयू इंटरफेस इज देयर, आईयूबी इंटरफेस इज देयर, ओके, एंड इंटरफेस बिटवीन टू आरएनसी इज IUR. If you connect one RNC to another RNC for some specific task ना, so in that case the interface between two RNCs is the IUR interface. ठीक है, so again I am repeating, in case of WCDM में handset is known as user equipment, PTS is known as node B, BSC is known as RNC, radio network controller. So all these three things ये आपको याद होना चाहिए. Second, different interfaces. Interface between user equipment and node B is UU interface. Interface between node B and RNC is IUB. Interface between two RNCs is IUR. Interface between RNC and the core network is, for circuit switching is IUCS, and for packet it is IUPS. ठीक है, सर ये बीएससी और बीएससी के बीच में इंटरफेस रहता है. actually in case of WCDM में ना, we are having two types of RNCs. One is the controlling RNC and the second one is the serving RNC. So for that ना, we are having one interface, that is the IUR. ये अभी आगे आएगा. ठीक है सर, बीएससी बीएससी के बीच में नहीं रहता सर ये. यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं इस तरह का, बट इन केस ऑफ WCDM में ना, वी आर हैविंग वन इंटरफेस. ओके. तो ये जो वाली जो स्लाइड है या जो दिख रहा है आपको सामने ना, ये पिक्चर ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ना, तो ये थोड़ा आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए. Now we come to this power control ना. What is power control for this wireless system? Why this is needed?
Yes, anybody? What is power control? And So sir, please repeat the diagram. I take the screenshot. okay, okay. सर ये तो बीटीएस से जो पावर रेडिएट होती है ना, वो वाली This पावर one. कंट्रोल है। Yes, 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 yes. Only sir, only 1 second. So now we come to this power control. So actually, what is there that this any wireless system, this will not work without effective power control. Okay, so in case of power control, what is there? We are having two types of power control. First one is the open loop power control. And second one is the closed loop power control. So basically, what is there? Suppose this is our BTS, na? This is our node B or BTS. And this is the coverage of this node B or BTS. And these are the mobile handsets like this. So in this picture, which I am drawing, what I have done, this is the node B, and these are the two user equipments, or these are the two mobile handsets. So one mobile handset is near to the node B, and second mobile handset is at the boundary of the coverage. So basically, what will happen? This user equipment is near to the BTS, and this mobile subscriber or user equipment is away from the node B. So if we transmit the same power from both the mobile handsets, so what will happen? Suppose I am transmitting some power from this mobile handset. So this mobile handset is near to the node B. Okay. So the power received by the antenna of the node B from first mobile handset, it will be higher. क्योंकि ये दोनों नजदीक है तो पाथ लॉस कम होगा. इन द सेम वे अगर हम लोग सेम पावर ट्रांसमिट करें फ्रॉम दी सब्सक्राइबर विच इज एट द बाउंड्री, तो ये जो पावर आपको नोड बी के एंटेना पे रिसीव होगी वो क्या होगी? दैट विल बी लेस, क्योंकि सब्सक्राइबर दूर है तो पाथ लॉस आपका ज्यादा होगा. और ये जो नोड बी का एंटीना है दिस एंटीना इज हैविंग टू प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन इज द एंटीना गेन एंड सेकंड वन इज द एंटीना सेंसिटिविटी. सो एंटीना सेंसिटिविटी इज द मिनिमम लेवल ऑफ पावर विच दिस एंटीना कैन सेंस. ठीक है. अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगी कि जो नजदीक वाला मोबाइल सब्सक्राइबर है इससे तो आपको ज्यादा पावर रिसीव हो रही है, और जो दूर का जो सब्सक्राइबर है उससे आपको कम पावर रिसीव हो रही है. तो बेसिकली ये जो एंटीना है नोड बी का दिस विल सेंस द सब्सक्राइबर विच इज नियर टू इट. इसको तो ये सेंस कर लेगा क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादा पावर मिल रही है, बट जो बाउंड्री पे बैठा हुआ है इसको ये सेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ से आपको लेस पावर मिल रही है. ठीक है ना. तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है. अब इसका सर इस कंडीशन में क्या मोबाइल पावर रेडिएट कर रहा है कि हाँ, मोबाइल इज हैविंग स्मार्ट एंटीना. मोबाइल से भी आप सिग्नल ट्रांसमिट करते हो ना. तो सर अभी इस कंडीशन में मतलब ये मोबाइल की पावर है ना? हाँ हाँ हाँ, जो मोबाइल से जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. जैसे अगर मान लो हम लोग कहीं क्लासरूम में बैठे हुए हैं मान लो मैं बोल रहा हूँ और सामने कुछ लिसनर कुछ बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अगर मान लो जो फर्स्ट रो के लोग हैं, अगर मान लो उनसे मुझे कुछ पूछना है या उनको मुझसे कुछ पूछना है, तो वो थोड़ा स्लो बोलते हैं. ठीक है ना. और जो लास्ट के लोग बैठे हुए, लास्ट रो में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा. अगर दोनों का लेवल सेम होगा तो उस केस में क्या दिक्कत होगी कि जो लास्ट के लोग बैठे हुए हैं उनकी आवाज मेरे पास तक आते आते काफी कम हो जाएगी वो एटीन्यूएट हो जाएगी, उनको मैं सुन ही नहीं पाऊंगा. तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी हो रही है कि अगर दूर के जो सब्सक्राइबर या दूर के जो मोबाइल हैंडसेट से पावर आ रही है वो काफी कम आ रही है, तो उसको मैं
मैं या नोड भी उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा है। तो ये जो सब्सक्राइबर है ना, ये हमेशा आउट ऑफ द कवरेज एरिया होंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो सब्सक्राइबर आपके नजदीक हैं वो कम पावर ट्रांसमिट करें, और जो सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम द नोड भी है, अवे फ्रॉम द बीटीएस है, वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट करें। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ, देखो कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इस केस में क्या करना चाहिए आपको? इसका सॉल्यूशन ये है, सपोज ये आपका नोड भी है ना, सपोज दिस इज द नोड भी, और मान लो ये इसकी यहाँ पे कवरेज है, ये यूजर इक्विपमेंट इसके बहुत नजदीक है, एंड दिस यूजर इक्विपमेंट इज अवे फ्रॉम द नोड भी। सो नाउ यू सी दिस सब्सक्राइबर ना, ये जो मोबाइल स्टेशन है, ये दिस इज नियर टू द नोड भी। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी द ओपन लूप पावर कंट्रोल। तो ओपन लूप पावर कंट्रोल में क्या होता है, ये जो मोबाइल सब्सक्राइबर है ना, इट विल चेक द लेवल ऑफ द पावर रिसीव। सपोज नोड बी ने कुछ सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया है, पावर ट्रांसमिट की है, तो इसको ये मोबाइल हैंडसेट रिसीव करेगा, एंड देन इट विल चेक द पावर लेवल ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। ठीक है, अब ये जो मोबाइल स्टेशन है, दिस इज नियर टू द नोड बी और नियर टू द बीटीएस, so it will receive high power from the node B. So it will check the level of the received power, and it will come to know that I am getting higher power. So in this case, this mobile subscriber, it will decrease its transmit level. It will decrease its transmit power. वो क्या रहा है, मोबाइल ने जो रिसीव सिग्नल है उसको चेक किया, अब क्योंकि ये नजदीक है नोड बी के, तो इसको पता लग गया कि आई एम गेटिंग हाई पावर, so it means I am near to the node B, so it will decrease its transmit power. और दिस सब्सक्राइबर ये बाउंड्री पर है, इट इज अवे फ्रॉम द नोड बी, तो यहाँ पे जो रिसीव्ड पावर होगी वो क्या होगी, इट विल बी लेस और मोर? लेस। लेस। यस, वेरी गुड, इट विल बी लेस। नाउ दिस मोबाइल सब्सक्राइबर, इट विल रीड दिस इंक्रीज। लेवल, when it will read, so it will come to know that I am getting lesser power, so it will automatically assume that I am getting less power. It means I am away from the node B. So in this case, this mobile subscriber, it will increase its transmit power. तो ये अपने ट्रांसमिट लेवल को इंक्रीज कर दो। सो दिस इज द ओपन लूप पावर कंट्रोल। तो इन केस ऑफ ओपन लूप पावर कंट्रोल, only mobile handset is involved. It will check the received power level. If the received power level is low, so it will assume that I am away from the node B. So it will increase its transmit power. If it is getting higher RX level, higher received power, it means it will assume automatically that I am near to the node B. So it will decrease its transmit power. इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन लूप पावर कंट्रोल। सो इन केस ऑफ ओपन लूप पावर कंट्रोल, ओनली मोबाइल हैंडसेट इज इन्वॉल्व, देयर इज नो रोल फॉर नोड बी और बीटीएस। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के ना। नाउ वी कम टू दिस क्लोज लूप पावर कंट्रोल ना। सो इन केस ऑफ क्लोज लूप पावर कंट्रोल, व्हाट इज देयर, इस नोड बी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है कि आपका जो नोड बी या जो बीटीएस है, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। इस केस में क्या होता है, सपोज दिस इज योर नोड बी, and this is the coverage, this is one mobile handset, and this is the second mobile handset. So every BTS or every node B is having one benchmark. Like suppose for this node B the benchmark is -95 dBm, -95। इसका मतलब क्या हुआ कि नोड बी ये कह रहे हैं कि मुझे हर एक मोबाइल सब्सक्राइबर से ना जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसका जो पावर लेवल है दैट शुड बी -95 dBm। सपोज आफ्टर ओपन लूप पावर कंट्रोल, तो सबसे पहले तो ओपन लूप पावर कंट्रोल होगा। सपोज आफ्टर ओपन लूप पावर कंट्रोल फ्रॉम दिस मोबाइल हैंडसेट ना, दिस इज गेटिंग -94 dBm, and from this mobile subscriber it is getting -95 dBm। तो किसमें प्रॉब्लम है अब, यहाँ फ्रॉम दिस सब्सक्राइबर दिस इज गेटिंग -95 dBm, तो ये तो ठीक है।
But from this mobile subscriber, now this is getting minus 94 dBm. And the benchmark for the node B is minus 95 dBm. So from this mobile handset, this node B is getting high power level now. So in this case, what will happen? This node B will instruct this mobile subscriber to decrease its power level by 1 dBm. और ये जो इंस्ट्रक्शंस जाता है ना, दिस इंस्ट्रक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पीसीबी. इसको हम लोग बोलते हैं पावर कंट्रोल बिट्स. मतलब क्या हुआ? नोड बी इज सेंडिंग द पावर कंट्रोल बिट्स टुवर्ड्स द मोबाइल हैंडसेट टू डिक्रीज इट्स पावर लेवल बाय 1 dB. ठीक है. तो इन केस ऑफ क्लोज्ड लूप पावर कंट्रोल, बोथ नोड बी एज वेल एज योर मोबाइल हैंडसेट, दोनों इन्वॉल्व होते हैं. बट इन केस ऑफ ओपन लूप पावर कंट्रोल, ओनली मोबाइल हैंडसेट इज इन्वॉल्व. तो ये सब आपको याद होना चाहिए. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द पावर लेवल, they are in the form of power control bits. We call it as PC. ठीक है. So this is the closed loop power control. अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर ना, वो ये एक लाइन यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखी है. सर ये पावर कंट्रोल जो प्रोसीजर है ये दोनों में होता है कि इसी में होता है, WCDMA वाले में, 3G में? नहीं, CDMA में भी होता है और WCDMA में भी होता है. अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है मैं बताने जा रहा हूँ. नहीं सर, वो 2G वाला जो होता है सिस्टम, उसमें भी ये कंडीशन रहती है क्या? वी आर यूजिंग द 2G पावर, वाला जो रहता है. वी आर यूजिंग द पावर कंट्रोल ना इन केस ऑफ वायरलेस. सो द जी बेसिक डिफरेंस क्या है इन केस ऑफ नहीं सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज पावर कंट्रोल? तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना. ओपन के केस में क्या था? ओपन ओनली मोबाइल इन्वॉल्व होता है, ओनली मोबाइल इन्वॉल्व. ओपन के केस में क्या है कि आपका जो ओनली जो मोबाइल हैंडसेट है ना, ओनली मोबाइल हैंडसेट इज इन्वॉल्व. एंड इन केस ऑफ क्लोज लूप पावर कंट्रोल, द नोड बी इज इंस्ट्रक्टिंग द, नोड बी इज आल्सो इन्वॉल्व. उसमें दोनों नोड बी भी इन्वॉल्व होता है और आपका मोबाइल हैंडसेट भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है ना. तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. तो अभी जो मैंने आपको बताया ना कि जो पावर कंट्रोल बिट्स हैं, दे आर सेंट फ्रॉम नोड बी टू योर मोबाइल स्टेशन टू इंक्रीज और डिक्रीज द पावर लेवल. तो यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू कीप द रिसीव्ड पावर एट द सुटेबल लेवल, WCDMA हैज ए फास्ट पावर कंट्रोल दैट अपडेट्स पावर लेवल हाउ मेनी टाइम्स? 1500 टाइम्स, 1500 टाइम्स एवरी सेकेंड ना. तो दिस पैरामीटर इज इम्पोर्टेंट. तो एक चीज क्या हुआ कि जो WCDMA है ना, इट हैज गॉट द फास्टर पावर कंट्रोल. फास्टर क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? कि WCDMA से पहले हम लोगों ने CDMA यूज किया है. तो CDMA में जो रेट था ना, दैट वाज 800 टाइम्स. मतलब क्या हुआ? योर BTS और योर नोड B was instructing all the mobile handset to increase or decrease the power level 800 times per second. तो वहां पे जो आपका रिफ्रेश रेट था, दैट वाज 800 टाइम्स. नाउ इन केस ऑफ WCDMA, दिस रेट हैज बिकम हाउ मच? 1500 टाइम्स ना. तो पहले से क्या हुआ? फास्ट हो गया, स्लो हो गया है? फास्ट हो गया सर, 1500. हाँ, तो ये फास्ट हो गया है. तो कई बार एग्जाम में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट द फास्टर पावर कंट्रोल. तो व्हाट विल बी द आंसर? WCDMA. WCDMA है ना. तो ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा. सर बाकी वो मैंने एक चीज पूछी थी आपसे, ये पावर जो कंट्रोल का जो प्रोसीजर आपने समझाया है ना, ये हाँ हाँ. 2G में और ये 3G में सेम रहता है क्या? नहीं रहता 2G में? नहीं, जैसे ओपन लूप तो कॉमन ही होता है. ओपन तो हर एक हम लोग टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं. 2G के जी केस में क्या कि वहाँ कुछ और मेथड्स भी होते हैं. हम लोग वी आर यूजिंग द टाइमिंग एडवांस ना. तो वहाँ कुछ चीजें अलग होती हैं. बट ओपन लूप पावर कंट्रोल विल बी देयर. इसके बिना तो ओके, सिस्टम काम ही नहीं कर सकता ना. इसका मतलब दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है सर, है ना? हाँ, बट पावर कंट्रोल विल बी देयर. अच्छा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ना, कई बार जो पावर कंट्रोल है ना, दी पावर कंट्रोल ऑल्सो गिव राइज टू दी फिनोमिना कॉल्ड दी सेल ब्रीदिंग. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल ब्रीदिंग ना?
shrinking of coverage. या सर अगेन पावर लेवल का ही होगा सर, पावर लेवल इंक्रीज एंड डिक्रीज। सेल ब्रीदिंग का मतलब क्या है? अगर मान लो कि ये कोई नोड भी है ना, सेल ब्रीदिंग मतलब क्या? सेल इज ब्रीदिंग, जैसे हम लोग करते हैं ना, इनहेल करते हैं फिर हम लोग एक्सहेल करते हैं, तो है ना। सेल ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली? जैसे अगर मान लो सपोज दिस इज द नोड बी एंड सर यस यस सर सेल ब्रीथिंग मतलब वो ट्रांसमिट को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू सर साइमल्टेनियसली पावर का चेकिंग करता है, उसको बोलते हैं हाँ बोथ मतलब साइड्स। ट्रांसमिट करके देन एडजस्ट करना अकॉर्डिंग। यस यस यस। ये आगे लिखा भी हुआ है ना कि दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन कवरेज एंड कैपेसिटी। देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मान लो ये नोड भी है एंड सम यूजर्स आर देयर लाइक दिस, जैसे मान लो ये हो गया इस तरह का ना, ये दीज आर दी यूजर्स, so many users will be there। अब ये जो यहाँ पे नोड भी है ना, इसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, कि कितने सब्सक्राइबर को ये साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं हमारे पास जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे यूजर आ जाए, बहुत सारे सब्सक्राइबर यहाँ आसपास आ गए हैं, मतलब क्या हुआ कि आपकी ना कैपेसिटी बढ़ रही है आपकी, और यहाँ पे कंजेशन आ रहा है। उस केस में ये बीटीएस या नोड भी क्या करता है ना कि इसका पर्पज होता है कि इट शुड सर्व लेस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन ए गुड वे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कि अगर मान लो इसकी कैपेसिटी 80 सब्सक्राइबर को हैंडल करने की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 80 सब्सक्राइबर्स को अच्छी सर्विस दे। और मान लो यहाँ पे 100 सर्विस सब्सक्राइबर आ जाए, तो ये क्या करेगा बेसिकली, इट विल डिक्रीज इट्स कवरेज। तो ये अपनी कवरेज को क्या कर लेंगे, ये यहाँ तक कर लेंगे बेसिकली। अब इस एरिया के अंदर जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनको ही क्या करेंगे, ये इट विल गिव द गुड सर्विस। तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, एक तरह से ना श्रिंक कर लिया। और जैसे ही अगर मान लो कंजेशन खत्म हो जाता है, मान लो सब्सक्राइबर कुछ यहाँ से बाहर चले जा रहे हैं या दे आर नॉट मेकिंग कॉल, सो इन दैट केस अगेन दिस विल इंक्रीज इट्स कवरेज, ठीक है ना। तो एज पर दी ट्रैफिक कंडीशंस ना, सेल क्या कर रहा है, अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर ले रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल ब्रीथ कर रहा है, इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है, अपनी कवरेज को वो कम या ज्यादा कर ले रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों की ना। जी सर। तो सेल ब्रीथिंग क्या बेसिकली, दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन कवरेज एंड capacity, which means the size of the cell varies depending on the traffic load, है ना। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ गिविंग बैड सर्विस टू 100 सब्सक्राइबर्स, सेल इज ट्राइंग टू गिव गुड सर्विस टू 80 सब्सक्राइबर। मतलब 100 को बैड सर्विस देने के बजाय आप 80 सब्सक्राइबर्स को अच्छी सर्विस दो। अब 80 के लिए क्या करेंगे, ये इट विल डिक्रीज इट्स कवरेज एरिया। सो that is the cell breathing। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है WCDM में। व्हाट इज WCDM में, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। कैरियर साइज फॉर WCDM में इज 5 मेगाहर्ट्ज, चिप रेट इज 3.84 मेगाचिप्स पर सेकेंड, है ना। एक्सेस टेक्निक इज WCDM में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रैन पार्ट। उसके अंदर क्या है, वी आर हैविंग द यूजर इक्विपमेंट, वी आर हैविंग द नोड बी, वी आर हैविंग द RNC। RNC is equivalent to BTS, equivalent to BSC, okay। Then node B is equivalent to BTS and user equipment is equivalent to your mobile station। Then we discussed about the different interfaces, UU interface, IUB interface, IUR interface, and then we discussed about the power control। What is the basic objective of power control? We are having two types of power control, open loop power control, closed loop power control। Then we see that in case of WCDM, we are having faster power control। In fact, we are refreshing it Sir, 1500 you times are per mute. second। Yeah। Sir, I not getting your speech. Hello. Hello, are you able to hear me? Yes sir। Okay, so there may be some problem at your end. All other participants are getting my voice। ठीक है, तो
And then we discussed about the cell breathing. So cell breathing, what is the cell breathing? So this is basically a trade-off between coverage and capacity. ठीक है? Now we come to this soft and softer handover. So what is soft handover and what is softer handover? Yes. Suppose this is your node B, na? Or BTS, and these are the sectors of this node B, na? This is alpha sector, this is beta sector, and this is gamma sector, na? And you are here. तो अभी क्या हो रहा है बेसिकली कि यू आर नियर टू दी एंटीना ऑफ अल्फा सेक्टर ना. सो जो अल्फा का जो पायलट सिग्नल है उससे आपको ना स्ट्रॉन्गर सिग्नल में आपको मिल रहा होगा. इसको हम लोग बोलते हैं आरएसएसआई ना, आरएसआई, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर. ठीक है. तो अभी आप अल्फा सेक्टर के नजदीक हो तो यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर पायलट फ्रॉम दी अल्फा सेक्टर. तो इस केस में क्या होगा, ये मोबाइल हैंडसेट ना अल्फा सेक्टर पे लैच हो जाएगा, अल्फा सेक्टर ऑफ दिस बीटीएस. अब क्या हुआ, धीरे धीरे मूव करते करते ना आप मान लो यहाँ पे आ गए. तो अभी आप किस सेक्टर के नजदीक हो? So now you have moved away from alpha sector, but now you are Gamma. near to the gamma sector. So in that case, what should happen? You are getting stronger pilot from the gamma sector. So in this case, what will happen? This mobile handset, it will detach from the alpha sector and it will attach to the gamma sector like this. Again आप मूव कर रहे हो, मान लो किसी गाड़ी में बैठे हो और आप यहाँ पे आ गए हो, तो इस केस में क्या होगा? This is your mobile handset. Now you are getting stronger pilot from the beta signal, beta sector. So you will latch to the beta sector and you will detach from the gamma sector. इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर हैंडओवर. इट मीन्स अगर आप सेम बीटीएस के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अटैच या डिटैच हो रहे हो तो दैट इज द सॉफ्टवेयर हैंडओवर. ठीक है. इन द सेम वे मान लो कि सपोज दिस इज वन नोड बी और वन बीटीएस और इसी के साइड में मान लो यहाँ पे कोई दूसरा बीटीएस है. दिस इज द बी बीटीएस and you are moving from this position to this position like this. So in this case, what will happen? You will get the stronger signal from the alpha sector of BBTS. So what will happen? You will detach from here and you will attach to the alpha sector of BBTS. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका नोड बी भी चेंज हो रहा है. यू आर मूविंग फ्रॉम नोड बी ए टू नोड बी बी. इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट हैंडओवर. तो सॉफ्टवेयर हैंडओवर क्या हो गया? इट इज बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ द सेम बीटीएस. इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर हैंडओवर. और सॉफ्ट हैंडओवर क्या हो गया? इट इज इंटर बीटीएस, मतलब आपका बीटीएस भी चेंज हो रहा है. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर हो गया इंट्रा बीटीएस. सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट क्या हो गया? सेम बीटीएस. इंट्रा बीटीएस. नहीं नहीं, अगेन यू आर कंफ्यूजिंग. सर सॉफ्टवेयर सेम बीटीएस. सॉफ्टवेयर हो गया. सॉफ्टवेयर हो गया. यस, आई एम रिपीटिंग. सॉफ्टवेयर हो गया सेम एक बीटीएस के. हाँ, सॉफ्टवेयर हो गया सेम बीटीएस या इंट्रा बीटीएस हो गया. इंट्रा BTS. है ना. Software means within same BTS and soft means BTS may be changed. हाँ, सॉफ्ट में क्या होता है, बीटीएस भी आपका चेंज हो जाता है. दैट इज इंटर बीटीएस. Okay, sir. मैं लिख दे रहा हूँ. इंट्रा बीटीएस आपका ये सॉफ्टवेयर हो गया है ना. ये हमारा सॉफ्टवेयर.
ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये ड्रॉ भी कर रखा है ना, ये रहा कि ये सेल ए है, ये सेल भी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि ये और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उन्हीं को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और ये जो हम लोग हैंडओवर यूज करते हैं ना सर, बेसिकली फॉर जीएसएम एंड डब्ल्यू सी डी, सॉरी फॉर सीडीएम एंड डब्ल्यू सीडीएम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेक बिफोर ब्रेक, है ना। कई बार अगर मान लो ये पूछा जाए आपसे ना, मेक बिफोर ब्रेक, इसका मतलब क्या हुआ? पहले सर बनेगा लिंक, फिर वो ब्रेक करेगा, दूसरे की पावर फिर डिटेच करेगा। यस यस, कि पहले आप ना अटैच हो जाओगे दूसरे वाले से, देन यू विल डिटैच फ्रॉम द लास्ट वन। इसको हम लोग बोलते हैं मेक बिफोर ब्रेक, है ना। तो फिर सीडीएम में या डब्ल्यू सीडीएम में ना, वी आर यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मेक बिफोर ब्रेक। अब ये कुछ फंक्शन है आरएनसी के, जैसे एडमिशन कंट्रोल हो गया। एडमिशन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? यू आर कंट्रोलिंग द एडमिशन, की जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप एडमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अपने एरिया में ना। तो एडमिशन कंट्रोल क्या है कि दिस इज ए वेरी क्लियर ट्रेड ऑफ बिटवीन कवरेज एंड द कैपेसिटी इन द WCDMA सिस्टम ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन कंट्रोल। एक होता है कंजेशन कंट्रोल हो रहा है ना, कि अगर मान लो कि किसी नोड बी के अंदर सम एक्टिव सब्सक्राइबर्स आर देयर एंड इफ द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, कंजेशन विल बी देयर, सो यू हैव टू कंट्रोल इट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यू कैन, या तो आप सेल ब्रीदिंग करो, कि जो आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं वो कवरेज आपकी कम हो जाएगी, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स है वो कम हो जाएंगे। या कुछ और मेथड्स भी है ना, तो ये जैसे एडमिशन कंट्रोल हो गया, कंजेशन कंट्रोल हो गया, सो दे आर दी पार्ट ऑफ आरएनसी। देन वी आर हैविंग सिंक्रोनाइजेशन ना। तो इन केस ऑफ सीडीएम में और WCDM में देयर शुड बी सम टाइट सिंक्रोनाइजेशन। वही टाइट सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स आर देयर। तो जब कोड जनरेट हो रहे हैं दोनों एंड पे ना, तो देयर शुड बी प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन फीचर ऑफ दिस सिंक्रोनाइजेशन ना, ऑफ दिस सीडीएम में और WCDM में। तो ये थोड़ा ना आप ये देख लीजिएगा, जैसे इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है ना, जैसे ये मैंने कहा था ना, BTS को हम लोग यहाँ पे नोड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम ये भी है रेडियो बेस स्टेशन, कई बार हम लोग RBS भी बोलते हैं। तो RBS एंड नोड भी ना, दे आर दी सेम थिंग। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, तो व्हाट इज द बेसिक जॉब ऑफ नोड बी, RBS और BTS। तो BTS को क्या कर रहा है बेसिकली, विद द हेल्प ऑफ BTS वी आर ट्रांसमिटिंग सिग्नल एज वेल एज वी आर रिसीविंग सिग्नल ना। तो लिखा भी है यहाँ पे, द रेडियो बेस स्टेशन हैंडल्स द रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन टू एंड फ्रॉम द हैंडसेट ओवर द इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है? UU इंटरफेस। ठीक है, इट इज कंट्रोल फ्रॉम द रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर।
है ना। तो अब ये नोड बी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आरएनसी कर रहा है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। एंड दिस नोड बी इज कनेक्टेड टू आरएनसी वाया आईयूबी इंटरफेस। फिर क्या है? आरएनसी है। तो आरएनसी क्या है आपका? रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बीएससी थी इन केस ऑफ जीएसएम, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आरएनसी। दैट इज द रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। तो जनरल आइडिया मैंने सब आपको दे दिया है पूरा। एक बार आप उसको एक बार और गो थ्रू कर जाएंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। एक थोड़ा आप लोग ये भी देख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रैब ना, रेडियो एक्सेस बियरर। ठीक है, तो रैब क्या है बेसिकली? ये एक लॉजिकल पाथ है ना, एक लॉजिकल पाथ है बिटवीन सब्सक्राइबर एंड दी कोर नेटवर्क। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर मान लो कुछ आपको सर्विस चाहिए, कुछ एक्सेस आपको चाहिए, तो एक ये पाइपलाइन है बिटवीन सब्सक्राइबर एंड दी योर कोर नेटवर्क। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रैब। तो रैब क्या है? रेडियो एक्सेस बियरर। अब ये जो रेडियो एक्सेस बियरर होते हैं बेसिकली, ये इनकी कुछ टाइप्स हैं। तो 3GPP हैज डिफाइंड 4 डिफरेंट क्वालिटी क्लासेस फॉर द रेडियो एक्सेस बियरर्स। ठीक है, एक तो हो गया, दूसरा पहला कौन सा है? एक तो हो गया कन्वर्जेशनल ना, मतलब जहाँ पे हम लोग चीजें कन्वर्ज कर रहे हैं, आपस में कुछ कन्वर्जेशन चल रहा है। जैसे आपका वॉइस टेलीफोनी हो गया, जिसमें हमें क्या चाहिए? लो डिले। क्योंकि वॉइस के केस में क्या डिले नहीं होना चाहिए, तो लो डिले होना चाहिए और ऑर्डरिंग हमारी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। कई बार ना ये आती है चीजें इस तरह के एग्जाम में कि जो कन्वर्जेशनल रैब, उसकी क्या खास बात होती है? लो डिले एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग। सेकंड वन इज दी स्ट्रीमिंग ना। स्ट्रीमिंग के लिए क्या होना चाहिए? डिले मॉडरेट होना चाहिए और ऑर्डरिंग कैसी होनी चाहिए? स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इंटरेक्टिंग के लिए, जैसे लाइक योर वेब सर्फिंग के लिए, मॉडरेट डिले होना चाहिए। फाइल ट्रांसफर करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नो डिले रिक्वायरमेंट। इफ यू आर ट्रांसमिटिंग सम फाइल तो वी कैन बियर द डिले। तो रैब इज योर रेडियो एक्सेस बियरर। दिस इज वन लॉजिकल पाथ बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द कोर नेटवर्क। फिर ये कुछ इसके डिफरेंट क्वालिटी क्लासेज हैं। तो ये जो वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ क्वालिटी क्लासेज: कन्वर्जेशनल, स्ट्रीमिंग, इंटरेक्टिव एंड बैकग्राउंड। इसकी क्या खास बात है? डिले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑर्डरिंग होनी नहीं होनी चाहिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, दैट इज दी एटीएम। ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा ना, ये एसिंक्रोनस ट्रांसफर मॉड्यूल, ये वर्ड आपने सुना होगा ना, एटीएम टेक्नोलॉजी। तो ये भी थोड़ा आप लोग देख लीजिए। बाकी ये सब इतना ज्यादा आपके काम का नहीं है। देन वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ मोड। एक को हम लोग बोलते हैं एफडीडी एंड सेकंड वन इज द टीडीडी। एफडीडी इज योर फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग एंड टीडीडी इज योर टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। तो एफडीडी के केस में क्या होता है कि सपोज दिस इज योर नोड बी and this is your MS na. So we are having uplink and downlink between node B and MS na. Suppose this is your uplink and this is your downlink. So in case of frequency division duplexing, we are having different frequencies for uplink and for downlink.
जैसे आप लोगों ने जीएसएम के केस में पढ़ा होगा ना, ये कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोगों ने देखा होगा अपलिंक और डाउनलिंक के केस में, तो दैट वाज डिफरेंट फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक। इसको हम लोग बोलते हैं एफडीडी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। एक होता है हमारे पास ना टीडीडी, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। तो इन केस ऑफ टीडीडी व्हाट इज देयर, वी आर यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक, बट टाइम स्लॉट विल बी डिफरेंट। जैसे अगर मान लो ये आपके पास एक कैरियर है ना, suppose one carrier is there, so for uplink and downlink we are using the same carrier, and between this carrier we are having time slots. Suppose for this carrier we are having 10 time slot. This is time slot number 1, this is the 10th time slot, like this, no? So suppose for transmit operation you are using time slot number 1. Suppose you are transmitting on time slot number 1, तो हम लोगों ने क्या किया, जो टोटल 10 टाइम स्लॉट्स है ना, इनको बांट लिया है कि जो शुरू के 5 टाइम्स, शुरू के जो 5 टाइम स्लॉट्स है दे विल बी यूज्ड फॉर टाइम ट्रांसमिट ऑपरेशन, and the last 5 time slot they will be used for the receive operation. So suppose you are transmitting on time slot number 1, so you will receive on time slot number 6. If you are transmitting on time slot number 2, so you will receive on time slot number 7. So this is the criteria for FDD and TDD. So I think this is all for this session. And again, I am repeating the important points. Na? तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी ना कि व्हाट इज WCDM में, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस टेक्निक। तो यहाँ पे जो एक्सेस मेथड है दैट इज WCDM में। यहाँ जो कैरियर साइज है दैट इज 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। द चिप रेट अवेलेबल इन WCDM में इज 3.84 मेगा चिप्स पर सेकेंड। अब एक्चुअली ये चिप रेट क्या है ना, ये आपके इसका सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। तो बस अभी आप लोग याद रखें कि यहाँ जो चिप रेट होता है दैट इज 3.84 मेगा चिप्स पर सेकेंड। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रैन का पार्ट देखा था, रेडियो एक्सेस नेटवर्क वाला, कि यहाँ पे जो यूजर इक्विपमेंट होते हैं, नोड भी इज देयर, है ना, RNC इज देयर, मोबाइल स्टेशन हैज बिकम यूजर इक्विपमेंट, BTS नोड बी एंड BSC हैज बिकम RNC। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। Then we discussed about the different interfaces like UU interface, IUB interface, IUR interface, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। Then we discussed about the power control methods, है ना, open loop power control and closed loop power control। यहाँ पे जो power control है that is faster for WCDM and rate is 1500 times per second। ये पैरामीटर आपको याद होना चाहिए। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया रिगार्डिंग दिस हैंड ओवर ना, हियर सॉफ्ट हैंड ओवर इज देयर, देन सॉफ्टर हैंड ओवर इज देयर। सॉफ्टर इज इंट्रा BTS and soft is inter BTS। This is make before break ना, this is make before break। And for transport na, transport technology we are using here is ATM in case of the WCDM में ना। Then we discussed about the FDD and your TDD, frequency division duplexing and time division duplexing। So these are some important points regarding this WCDM।
So I am closing the session, and if any doubt is there, you can write in the chat box, and you can also ask me later on. सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, समझ में आया आज। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, आपके समझ में आया। बाकी इसको ना थोड़ा पीडीएफ तो आपके पास होगी ना, थोड़ा तो अगेन आप रिवाइज करो, कई बार और 2-3 बार और पढ़ लो, तो ये इट विल बी क्लियर टू यू। सर ये नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे हम लोग को? नोट्स कौन से वाले? सर जो ये पढ़ा रहे हैं सर, इसको अगर हैंड आउट कैसे मिल जाएंगे सर? ये तो हमारे इस पे पड़ा हुआ ना, जो ट्रेनिंग पोर्टल है ना बीएसएनएल का। अच्छा सर। हाँ, वहाँ पे ये अवेलेबल है। अच्छा उसमें साइट क्या था, लिंक क्या होगा, बीएसएनएल? बीएसएनएल का जो ट्रेनिंग वाला पोर्टल है ना, इसका एक 10.192 समथिंग, ये ग्रुप में मिल जाएगा कहीं पे आपको ना, ये इस पे आप अच्छा जाओगे तो वहाँ पे है ये। Write it on the screen, sir. है जी। Please write on the screen. अभी मुझे ये याद नहीं है कि इसका आईपी क्या है, बट वी विल शेयर इन द ग्रुप ना, अभी थोड़ी देर में हम लोग शेयर करा देंगे इसको। सर training.bsnl.co.in लिखेंगे ना, तो वहाँ पे वो आईपी दे देता है हाँ, गूगल वहाँ पे पे वो, जैसे हाँ यस यस, वहाँ पे वो आईपी आपको दे देगा, तो वहीं पे आईपी ना दे देगा। डिजिटल लाइब्रेरी में ये है अवेलेबल सारा कंटेंट। हाँ, वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी में मिल जाएगा सारा। अच्छा, ये somebody is asking this sir about the chip rate. ओके ओके, एक्चुअली चिप रेट के केस में क्या है ना, देखो ये एक, सबसे पहले क्या होता है ना कि वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन, फिर हम लोग क्या करते हैं ना, वी आर डूइंग द ए टू डी कन्वर्जन, है ना। सबसे पहले बेसबैंड इंफॉर्मेशन विल बी देयर, देन वी आर डूइंग द ए टू डी कन्वर्जन, देन वी आर डूइंग द, एक मिनट ना, दिस इज द बेसिक ना डायग्राम फॉर द ट्रांसमिट साइड। जैसे आपने क्या किया कि यू आर हैविंग द इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको ना ए टू डी कन्वर्ट करते हैं, तो आफ्टर ए टू डी कन्वर्जन ना वी आर गेटिंग बिट्स, तो यहाँ पे हम लोगों को बिट्स मिल जाती हैं। देन वी डू द दिस सैम्पलिंग एंड चैनल कोडिंग, है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, वी आर गेटिंग द सिंबल्स, आफ्टर दिस वी आर गेटिंग द सिंबल। ये वर्ड आपने सुना होगा सिंबल ना, एंड देन वी डू द स्प्रेडिंग ना, एंड आफ्टर स्प्रेडिंग ना वी आर गेटिंग दिस रेट 3.84 मेगाचिप्स पर सेकंड। So basically this is the conversion, कि first you are getting bits, then you are getting symbol, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंबल के अंदर बिट को अलग अलग मैप कर रहे हैं, फिर हम लोग चैनल कोडिंग कर रहे हैं, है ना, डेटा को डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में मैप कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग सिंबल्स, एंड आफ्टर दैट वी डू द स्प्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेडिंग कोड, देन वी आर गेटिंग दिस रेट 3.84 मेगाचिप्स पर सेकंड। अगेन ये जो कैलकुलेशन है कि ये क्या प्रोसीजर है, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अभी तो सिर्फ आपको याद रखना चाहिए ये, ठीक है। तो बेसिकली बिट एंड चिप ना, ये दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं, पर दोनों को आपको अलग अलग करना है, तो एक को हम लोग बिट बोल दे रहे हैं और एक को हम लोग चिप बोल दे रहे हैं। तो चिप का जो रेट है ना, दैट इज एट हायर रेट, चिप रेट इज हायर इन कंपेरिजन टू द बिट रेट, ठीक है ना। बाकी जो समरी है सर मैंने आप लिख दिया है सेट। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जो ये अभी एफडीडी और टीडीडी पढ़ाया था, इसमें सर टीडीडी वाला थोड़ा सा दोबारा बता देंगे क्या? टीडीडी, जी। देखो टीडीडी के केस में क्या होता है ना कि जो आपका, वो जो ये आपका मान लो नोड भी है या बीटीएस है ना, और ये मान लो आपके पास यहाँ एमएस है, तो टीटीडी के केस में क्या होता है कि जब मान लो आपका अपलिंक वाला पार्ट है और जो आपका डाउनलिंक वाला पार्ट है ना, वी आर यूजिंग द सेम कैरियर या वी आर यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें हम लोग करते हैं क्या है कि जो कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग टाइम स्लॉट में बांट लेते हैं। सपोज दिस इज योर कैरियर, तो हमने क्या किया, इसको ना अलग अलग टाइम स्लॉट में बांट लिया। जैसे मान लो अगर आपने ये टाइम स्लॉट नंबर 1 है और ये मान लो टाइम स्लॉट नंबर 10, सपोज वी आर हैविंग 10 टाइम स्लॉट, फिर हम लोग करते क्या है इसको ना कि जो
10 टाइम स्लॉट्स हैं, इनको हम लोग बांट लेते हैं कि जो शुरू के 5 टाइम स्लॉट हैं दे विल बी यूज फॉर ट्रांसमिट, और जो लास्ट के 5 टाइम स्लॉट है दे विल बी यूज फॉर रिसीव ऑपरेशन। मान लो कोई यूजर है, तो अब उस यूजर को हमने क्या किया, टाइम स्लॉट नंबर 1 दे दिया फॉर ट्रांसमिट। अब उनको रिसीव करना है तो डाउनलिंक साइड में तो दे विल रिसीव ऑन टाइम स्लॉट नंबर 6। एक की हमने मैपिंग 6 से 7 कर दिया, 2 को हमने क्या कर दिया 7 के साथ मैपिंग कर, तो दिस इज द टीडीडी। तो इन केस ऑफ टीडीडी ना वी आर हैविंग टाइम स्लॉट्स, ओके सर, फ्रीक्वेंसी इज सेम। ओके। जैसे पहले हम लोग ना डायरेक्ट यूज करते थे, शायद आप लोगों को आइडिया हो, एक टेक्नोलॉजी थी डायरेक्ट। अब तो ये स्क्रैच हो गया फील्ड में, अराउंड 2005 तक हम लोगों ने यूज किया है। तो वहां पे हम लोग ये टीडीडी यूज करते थे, टाइम डिवीजन डिफ्लेक्शन। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर माय सेशन, है ना? सर सर हमने ये उसकी फ्रिक्वेंसी एफडीडी की बता दीजिए, सेम होती है कि अलग अलग होती है एफडीडी मोड की? एफडीडी में तो फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट क्लास में, जीएसएम के केस में जो अपलिंक होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 8902 टू 915 मेगाहर्ट्ज। हाँ और जी। डाउनलिंक डाउनलिंक होती है फ्रॉम 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज। तो वो अलग अलग जी होती है ना दोनों। हाँ सर, ठीक ठीक। हाँ, तो वो दोनों की तो दैट इज योर एफडीडी मोड। और डीडी में सब फ्रिक्वेंसी सेम हो जाती है या टाइम स्लॉट सर इसका अलग अलग होता है? हाँ, यस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ना। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वो राइट साइड में लिख दिए हैं आपको ना, कि ये दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। ओके हेलो सर। यस यस। सर एक हाँ, मिनट, इसी सर क्लियर से रिक्वेस्ट एफडीडी को समझा देंगे सर, एफडीडी को? हेलो। I requested to God. I always receive your type. You are my guru. You are my teacher. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेरी, अगेन Sir, रिपीट। I in future I pray to God. You are my. You are in all time. You are my teacher. ओह, थैंक यू सर। सर वन मोर थिंग। यस यस। सर ये आईओबी इंटरफेस जो है वो भी क्लोज इंटरफेस है? बेसिकली क्या है ना कि जो इंटरफेस नॉर्मली जो होता है आपका नोड भी, या नोड भी और आपके आरएनसी के बीच में ना, तो बेसिकली क्या है ना, ये आईयूबी इट 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 शुड आल्सो बी क्लोज्ड। तो उस केस में भी आपका जो आपकी जो नोड भी और जो आरएनसी है दोनों सेम मेक का होना चाहिए। And like that also IUCS and IUPS will be open? That will be open. Okay sir. So thank you, thanks to all the participants, and Thank you, sir. I am ending the session. Okay, thank you. थैंक यू सर। Thank you. अगली क्लास 2 बजे से शुरू होगी। थैंक यू सर। और 2 बजे से शुरू होगी, और होगी भी सीएम ही होगी, जीएसएम की होगी। ठीक है चौहान जी। आप बंद कर सकते हैं नागर साहब क्लास। तो मैं मीटिंग एंड कर दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू।